हेलो हेलो निसार भाई, क्या हाल चाल? क्या लाइव नाउ? Are we आई live, थिंक Rohan? यस ब्रो, व्हाट्स अप? Welcome, everyone, to the second episode of the AI Bros podcast live on YouTube. I have with me my dear friend Rohan Singh. कैसा है रोहन? क्या हाल चाल? बस एकदम मजे में ब्रो, सो रहा था मैं तो। तू बता, कैसा क्या गया किया संडे वीकेंड? को? What did you do सेम on एज यूजुअल। Sundays? मैं संडे को सिर्फ सोता हूँ और कुछ नहीं Rest, करता। rest day, best day. यस, मंडे का Let's इंतजार quickly, करता हूँ मैं। let's quickly do a sound check वगैरह कर लेते हैं, हाँ, मेरे को लग रहा है सब and कुछ then आ we रहा है can अभी। proceed. आई थिंक वी कैन स्टार्ट। आ रहा है क्या? मैंने आज मेरा चेस्ट डे था, so I did chest, and then I went to the mall. बच्चे का शॉपिंग किया थोड़ा। जो हाँ, घर के थोड़ा-सा बाहर वाला मॉल। खर्चे-वर्चे हुए। हाँ, हाँ। घर से 1 किलोमीटर दूर मेरे पास एक मॉल है, तो मैं वहीं जाता हूँ। मिनिमाइज़िंग माई ट्रैवल ट्रैवलिंग, डिस्टेंस। या आई थिंक वही सबसे इफेक्टिव वे है ट्रैफिक में नहीं फंसने का बैंगलोर में। यही है आत्मनिर्भर भारत। कूल ओके, ब्रो। आई थिंक वी आर गुड रोहन। लेट्स स्टार्ट विद द एजेंडा फॉर द डे देन। या आई क्या थिंक बोलते हो? स्क्रीन दिख रहा है क्या? Yes, I am able to see the screen. ओके। So the first thing that we are going to do is fine tune a Flux model. Flux model is an image text to image model, Rohan. So what we are going to do is we are going to take your images, we are going to fine tune a Flux model, and we are going to then generate infinite images of you. So हम तुम्हें आज से अमर बनाते हैं, Rohan. You will be, alive forever. आई थिंक यस, लास्ट स्ट्रीम में हमने बोला था कि हम ये करेंगे आज, Yes. व्हेन वी विल बी लाइव। तो The क्या next बोलता है? next thing we'll be doing, Rohan, is building 3D games. So we'll try to build some 3D games in Python, right? We'll use Oven preview model to do that, right? Let's go back to agenda, Rohan. पहले agenda खत्म करेंगे, हाँ. So that we'll be doing. Then we'll be solving some tough math and physics problems. Again, using Oven preview. देखे तो सही, how intelligent is this new kid on the block? देखते Okay. हैं, लास्ट टाइम तो उसने एक दो का आंसर सही दिया था। Yes. तो And yeah, मतलब इतना भी हमने टेस्ट नहीं किया, but this time we are going to test it very nicely. ओके, विल सी। एंड देन व्हाट वी हैव? We have then strawberry architecture. We have a guest with us who is going to join us when we are going to discuss strawberry architecture. It's our paper boy Pratik. He's responsible for all the research papers in our live streams, and he's also like newspaper guy who will give us some latest news, some insider information from the AI world. And at the end, we will be discussing some few cool AI news of the week. I'm really excited about it. Rohan, are you excited? यस ब्रो, आई एम। आई थिंक वी कैन स्टार्ट विथ आवर फाइन ट्यूनिंग फ्लक्स मॉडल एंड विल सी, क्योंकि वो फ्लक्स मॉडल विल गोना टेक 30-40 minutes of time, right? So I Yes, think Rohan. I think we can start with training that flux model, and then we can go to either building this 3D game or solving puzzles or maybe talking about strawberry architecture. क्या बोलता है निसार, जाना चाहिए हमको? Yes, let's get started, bro. क्या बोलता है सबसे पहले, how it will work? So let's go to the steps what we will need, Rohan. The first step is basically we'll have to create training images and annotate them. मतलब हमारे पास हमको तुम्हारी 10 images चाहिए होगी. We will need your 10 images. We are going to annotate them. Annotate as in rename them as a photo of X person, a photo of Y person, those kind of stuff. And then what we'll do is we'll zip them up. We'll zip them up and we'll use replicate to fine tune this Flux LoRa model. We already have the zip, rohan.zip we have. We are going to go to replicate. We are going to upload that. There is a script over there where we'll be uploading that. We'll be providing all these hyperparameters, training steps, Hugging Face details. Maybe we'll have to get Hugging Face API keys and all that. We'll do that. And then at the end, we'll start the training. Okay? Once we start the training, it might take 50 minutes or 30-40 minutes. So हम क्या करेंगे? We will start the training now. And towards the end of the stream, we will see what happened over here, right? Okay, so you are saying it, So we just need 10 images to train this model. So will it yes, work? the more images the better, but yeah, the minimum number of images is like 10, Ron. Okay, I think we are good then. I have 10 images. So we have such 1 2 3, we have shown in the slide that 3 input images. We are going to pass it through the LoRa fine tuning process, and at the end of the day we are going to get Rohan as a Hulk, Rohan as a Joker. जो चाहिए मिल जाएगा. चलो फिर जाते हैं, I think without wasting the time. Yes, let's open all the URLs, Rohan. We have to open the training URL and inference URL and all those stuff.
We'll first go through Flux GitHub if you are interested in. I'm going to show you the We can easy. start the fine tuning process. They apna Abdul bhai hai. He's one little coder. Yes. So we are not going to watch this video. We are going to just directly go to the recipe. Yeah. So this is what. Can you zoom in on? Can you zoom in a Yeah, little? one sec. Is it okay now? Yeah, perfect for me. Okay. I So think we can start. yes, so creating training, Rohan. Training on this Okay. model, you have to run it on NVIDIA A100 80 GB GPU hardware, which will cost some dollars per second. That's fine. What we are going to do is we are going to, can you scroll down, Rohan, a little? We are going to fine tune a Flux model on our own images. Yes. So can you open this in the Mozilla browser? Yes, bro. Why not? I think this is the site. This is the site, right? I hope it will work. Okay, here we are. Yeah, we have logged in. Awesome. Let's open the link. We'll have to open the link over here. One sec, huh? Yeah. So there are two URLs over here on. One is for training and one is for inference. First, we will use it for training, right? And once we start the batch of training, we'll see if the training is going fine or not. Once it is good, then we will move on to the next things that we have to do, right? Okay. I think now we have both the URLs with us. So, क्या करना चाहते हो तुम बताओ? Okay. So let's go to the training one. Training में जाते हैं. Here we are. Okay. So let's start. Create a select a model. Destination में जाना है. थोड़ा ऊपर scroll करना है रोहन. Yes. Okay, okay. थोड़ा हाँ. Yes. और थोड़ा zoom में रहेंगे. ठीक है? Yes. Because this I think is a left-sided website. Okay. Let's go down. Okay. So I think the first thing we have to do is to select a model, right? Yes. Let's create a new model. Okay. Yes. And let's name it Rohan dash live dash episode 2 EP2. Yeah, that's good. So it's going to be a public model. Private model हम host नहीं कर पाएंगे. Let's scroll down. We have to upload the zip file over here. So Okay. whatever images we have of yours, we are going to upload it as a zip over here. So I think it's a zip of 10 images, right? Minimum that anyone will need. And every image we have annotated as a photo of Rohan, right? If you just open that zip, let's see, open that zip. Okay. How does the data look there? I think this is how it looks. A photo of Rohan Singh, or photo of Rohan Singh, that's great. Okay, let's go back. We'll keep the default name as the Black Forest Labs / Flux1 dev. We are going to do a LoRa fine tuning on Flux1 dev. Now, this is one thing I have to give you, Rohan, which is Hugging Face token, right? Hugging Face token हमें क्यों चाहिए? Because after the LoRa adapter gets trained, right, we will have to store this adapter somewhere. So let me just pull off settings in Hugging Face. मैं तुमको देता हूँ एक API की, ठीक है, Rohan? Okay. Let me just pull that up. I think anyone who wants to train this model, they have to first go to Hugging Face and get that token, right? Yes, so they have to have a Hugging Face account. क्योंकि ये आप मॉडल तो ट्रेन कर लोगे, उसके बाद आप जाओगे कहाँ, मतलब you have to store it somewhere, right? Otherwise your LoRa's will get deleted. So LoRa is basically a low rank adapter. So there is a base model and we train an adapter on top of it, right? And we just train that adapter on Rohan's information, and the information of Rohan and adapter remains different. Once when you want to do inference, these both get combined. You will see all these things. They both get combined, and then the image generation happens. So I have created these fine-grained tokens, Rohan. Just let me share it with you. Yeah, you can send me. Where should I send it to you? Should WhatsApp. I send it to you? Yeah. Most secure social media network. If anyone is in the chat, they can drop a hi. But let's go. I'm opening up end-to-end encryption के साथ. Yes. Mark Bhaiya Zindabad. I have sent you, Rohan, the face token. Yes. So I pasted it. Okay. Now we have the token. Now what's next? So what's next? Training steps. Okay, so this training steps can range between 1,000, 2,500. Anything is good. The more the steps, the more training time it's going to take, right? Correct. Utna steps model perform karega. So we will keep it at 1,500. It's a 1,000 is the minimum. 1,500 is good. Learning rate, we will keep it as default, right? What else is there? Batch size, we will keep it 1. Resolutions, let it be default values. LoRa linears, these are all the adapter settings, 16 layers of LoRa linear and LoRa alpha. Now at the end, we have to enter the repository ID.
So Right. let me give you this as well. This is This Hugging is Face repository. this Yes. is the repository on which this adapter will be uploaded, right? Yes. So once our training gets completed, our LoRa adapter should, get saved over here. That's nice. So I think now we have all the details, right? Okay, just let's go through it one by one if we are missing something because training Okay. चालू हो गया उसके बाद पता नहीं चलेगा. So we have created the destination. सबसे पहले We नाम have डाल दिया गया है. So we have this mhm. name, and then we have selected our image zip, which has 10 images of me. Yes, we Then uploaded it, right? yeah, we uploaded it. No, Uh, click on it and upload it. Yes, again. Yes. uh, Okay, just do one thing. Zip को open करो. huh? I think there is a folder inside a folder. That is an issue. Okay, Let's go downloads. fix this. Yeah. Tracked all. So now when you open this, रोहन के अंदर ये फोल्डर के अंदर है तो ये बाहर वाले फोल्डर को जिप कर दो. ये वाला Correct. हाँ. Send to zip, right? Compress it. Yes. And let's upload this one. One Right? sec. I'll just name it as Rohan1.zip. Okay. Yes, And you can. Yes, you can. chalo dekhte hain. I think this will work this time. So selected this zip. Click open. I think we are still facing the same issue. One sec. Let me I try think to it's not drag showing it. us. No idea. Has it changed anything? Can you do cross? Do cross? Huh? Okay, then it's doing it, Ron. It's doing it. Okay, let me try again. Yeah. I will drop it. The UI is not that up to the par. So let's start and create training, Ron. Let's create the training. Okay. Okay, so must be in Valid lower name. cases. Rohan, very Okay, bad. bro. Sorry, bro. सब कुछ छोटा कर दो. Rohan Live TP02, right? Yep. लगता है अब तो चलना चाहिए. I think now we have all the I details. think Let's it say should create trading. work. Create training करने पे कुछ error नहीं आया? No, a field is No, required. Okay. it says The minimum zip is 12 creating some images issue. required. Okay. I think we तो need रोहन एक काम करो. to Zip के duplicate अंदर some. हाँ. There are already duplicates, रोहन. क्या कर रहा है? तूने मुझे अपनी 10 इमेज नहीं दी, बता. मुझे duplicates करनी पड़ी. We Okay. will, I think we're gonna test this model now, whether it works on duplicate image or not. So now we It have is how many going to work, images? yes. So do we So have we 12? have 14 14. Perfect. images We have now. 14. Perfect. Can't I just Let's select all this and drop it here? no, delete it and zip it. They are explicitly asking it for a zip. Yes, let's zip Okay. it. We have 14. Send to zip. Cool. And then we'll upload our folder. Yes. I think there's some problem. It's not working. Upload functionality is not working. Or Yeah, maybe I think there's some problem with this website. I'll just try to do it from here, drag or click. let me check on my Rohan system. downloads. Rohan. नहीं रोहन अपलोड करने के बाद वैसे ही दिखता है. You start the training. You start the training. ठीक है. So I dragged it here. Yeah. Then Rest all settings remain the same. yes, and I Let's start. Let's create the training. नहीं हो रहा है ना भाई, पता नहीं. I think Mozilla में नहीं चलता है क्या? तेरे इधर ट्रेनिंग Fine. चल रहा है क्या? क्लिक कर उस पे. हाँ अभी अब उस पे क्लिक कर फॉर अपलोडिंग. हाँ अपलोड इट लाइक दिस. One sec, that's what I'm Zip. trying to do. रोहन के अंदर ही Yeah. है. This one. Click open. Do I have to inspect it now? Inspect element. Solve may not Chalo. inspect. Maybe I have to check this network tab. I have. Okay. Can you try it on some other browser? Yeah, maybe. I think there's an issue with that, but let's try. Containing your training data, zip/tar file. It's a zip file that we are sharing, right? File names might be captioned like this. Our file names are also captioned. Oh ho ho ho.
रेप्लिकेट्स हो गया क्या भाई? भाई ये देख यहाँ पे फट रहा है कंटेंट सेटिंग। आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग सर भाई, टुडे इज नॉट अ गुड डे। संडे है ना भाई, कम Today is ऑन। not a good day for संडे, LoRa fine tuning. लोरा फाइन ट्यूनिंग संडे को नहीं चलता, कम ऑन। अरे ऐसे थोड़ी होता है यार, ऐसे थोड़ी होता है। एक बार अरे फिर से नहीं, ट्राई करेंगे। एक सेकेंड ना, मैं ये मेरा हो करके, गया, मेरा हो गया, फिर से कर। अब हुआ। ठीक है तो लेट मी गो। अरे आई रिफ्रेश क्यों किया यार, सारी एंट्रीज चली जाएगी। ठीक है, so I think this model we will say that we're going to create a new model. We call it Rohan Live Episode 2. And हम्म here we will upload the set of first 10 or 14 images that we have. I think the minimum is 12. Then this model setting is default. Hugging Face token is required. हम्म So Hugging Face के वेबसाइट से लाके टोकन डाल दिया। फिर हम्म स्टेप्स को will increase from 1000 to 1500, right? Learning rate हम्म will be default, batch size will be default, resolution will be default, and then the repo on which we are going to upload our adapter. And let's say create training and say पर save. अपलोड हुआ क्या? नहीं यार, तेरा कुछ तो दिक्कत आ रहा है। मैंने तो ऐसे ही किया तो मेरा तो हो गया अपलोड। Uh, कैन यू ट्राई इट ऑन अ गूगल ब्राउजर? मोजिला कौन यूज करता है बे आज के जमाने में? निसार तूने तेरा स्वैप कैसे हो गया वीडियो? अब मेरे को प्रतीक दिख रहा है। हे प्रतीक। ये क्या कर दिया तुम लोगों ने भाई? चल निसार, अभी तू बीच में आ गया है, कुछ तो हर जगह इश्यूज ही इश्यूज हो रहे हैं भाई। हाँ, स्टेप बाय स्टेप लेते हैं उसमें क्या है। एक काम करते हैं ना, तू स्क्रीन शेयर कर and let फिर me तो आग लग stop, जाएगी। let me stop your camera for some time, that's fine, I think। ठीक है, ठीक है। ठीक है ना? आई विल नीड शेयर एक्सेस, लेट या मी या रीड या, क्लेम। वन सेक, ओके। रुक मैं ले लेता हूँ। होस्ट बना दो सर, होस्ट बना दो, रिक्लेम होस्ट हो गया मैं। चलो सर भाई, आई थिंक नाउ वी विल सी योर स्क्रीन। पता नहीं भाई क्या हो रहा है, ये कैसे इश्यूज है? आग लग गई है बस्ती में। और हम रहे मस्ती में। अरे रोहन भाई मस्ती में। अबे अचानक से मैं देखा ये प्रतीक कहाँ से आ गया तेरी जगह? तो आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन? या वी आर एबल टू सी यू एज वेल। मैंने छोटी जगह पे स्पीकर व्यू कर परफेक्ट, देता हूँ। परफेक्ट। I am 100% into it. Okay, so हाँ, let's try from my system. ठीक है, ओके। तो मैंने भी एक रोहन अंडरस्कोर लाइव टू करके रखा है। ठीक है, द हाँ। ट्रेन मॉडल विल बी एडेड ओवर हियर। ठीक देख है, ये रोहन डॉट जिप यही नहीं डिलीट। आ रहा था भाई, ऐसा यहाँ पे हाँ, तो अपलोड होके। तुम मोजिला यूज करोगे तो कैसे चलेगा भाई? ये देखो, तुरंत आ गया। भाई मौजिला ही तो डेवलपर्स ब्राउजर है, कम ऑन। अरे मोजिला की मौत हो चुकी है भाई। इज डेड इन द कॉफिन, इन द कॉफिन सीधा। नाउ आई नीड माय ओन हगिंग फेस टोकन। वाओ, गिव मी 1 second गाइस। तेरा जिप तो मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तेरा डेस्टिनेशन दे दिया। नाउ वी नीड टू गिव इट द हगिंग फेस टोकन। लेट्स मीनवाइल कॉन्फ़िगर स्टेप्स। स्टेप्स विल बी 1500, ओके, राइट? या, आई थिंक 1500 tokens। यस, एंड ऑल द सेटिंग्स विल And बी डिफॉल्ट। yes, learning rate will keep it default, will not touch the batch size, and resolution, LoRa alpha, and at the end we have to give the repo ID. Just let me copy the first Hugging Face token. So if I copy Hugging Face token, I'll paste it over here. Token किसी को दिखाना नहीं दोस्तों। यस, इट्स सीक्रेट, नहीं तो सब Yes, तुम्हारे उस पे ही अपलोड कर ठीक है। देंगे। ऐसा फ्री में So मॉडल्स I am आएंगे ना put सर भाई रात को। सोया तो 2 मॉडल था, सुबह उठा तो 4 हो गया। वैसे I don't care man, it's Hugging Face's space, he can do whatever he wants। ठीक है, निसार स्लैश रोहन डैश लाइव टू करके रेपो आईडी है, और उसके अंदर ये स्टोर हो जाना चाहिए। ठीक है रोहन, दिस शुड गेट स्टोर इन रोहन स्लैश निसार लाइव। नाउ आई विल क्रिएट ट्रेनिंग बटन। गॉड ब्लेस मी। ओके, गॉड ब्लेस यू। स्क्रोलिंग हो रहा है। आई थिंक हुआ क्या? ओके, फाइनली, ओह इट्स वर्क। लगता है ना सर द ये तेरे से, ट्रेनिंग हैज स्टार्टेड। लगता है ये बैंगलोर से ही ट्रेन हो पाता है, पुणे से ट्रेन नहीं हो अरे सकता। अरे, सारा एआई बैंगलोर में ही ट्रेन हो रहा है क्या? यस, सारा एआई बैंगलोर में ही है भाई। So it has started। तो मतलब what we will be using is रोहन A100 का हार्डवेयर यूज करेंगे, 80 GB of NVIDIA GPU RAM। ओके, स्टार्टिंग प्रिडिक्शन, द टोकन हैज नॉट बीन सेव, टोकन इज वैलिड। सो हमारा हगिंग फेस टोकन इज गुड।
The logging is successful. It has detected the zip file. It has extracted the zip file. बहुत ही बढ़िया. Okay, now it's नाइस. doing some transformer shenanigans. Let it do that. We will चलो wait. बट हम एक बार देख लेंगे ना कि सही से सब ट्रेनिंग शुरू हो गई. Then we will move on. टू द इसको नेक्स्ट सेशन. it could take around 30-40 minutes to train this LoRa, but best part is we have stored it in Hugging Face, so our problem is solved. Okay, a lot of things happened. Checkpointing हो गया, running one process, loading the flux model, loading the transformer, loading the variational autoencoder VAE, loading T5 कर दिया है, shards download हो रहा है. So this is the tokenizer that is getting downloaded. Let it download all the default models, right? Loading clip. Rohan, तेरा मेरा मेरे favorite clip फेवरेट भी है. एमबीएस के अंदर क्लिप Clip ने बहुत सताया है हमको. with clip since last 5 years. करेक्ट. Oh God. Created LoRa. So हमारा 16x16 का LoRa बन गया है. ठीक है, low rank adapter. Now it's pre-processing the image dimensions, Rohan. It और has ये found 12 images. और ये इमेज डायमेंशंस क्या है जो हमने उनको दिया है बनाने के लिए, या Yes. जो इमेजेस आए. अच्छा, ये फाइल से. So ओके. yes, it is resolution. Width और हाँ. height वाला जो resolution था, it's that. It is now started, I think, caching latents to disk कर दिया है. It has found 12 images. It's doing all this processing, pre-processing, custom flow matcher. There's a lot of things going on when you fine tune a LoRa, right? Not everything can be explained. और इतना क्षमता भी नहीं है मेरे में, आता भी बट नहीं उतना मेरे को. बट आई थिंक द मेन the end state will be that you will need 10-15 images of yourself if you, Yes. and then you need to annotate it and you can upload And it. Ron, we have Shiva in our chat. Shiva Shakti is in the chat. He says, lovely. आ And जाओ भाई, फ्लक्स फाइन ट्यूनिंग करेंगे. Shahnawaz Ansari says, great work, bhai. Thank you, Shahnawaz. Thank you so much, यार. How are you guys, man? कैसा चल रहा है आपका Sunday Sunday? is fun day निसार भाई. वो तो मैं Sunday कहाँ को. से बीच से उठा के लाया हूँ स्ट्रीम में. So गायब ही हो Ron, गए थे. ट्रेनिंग शुरू हो गई है. हो ठीक है, गई है. 1%. हाँ देख, 1% हो गया है. Let's go Correct. for 2% and then we will move on. ठीक है, we will come back to this model at the end of the stream. तो तेरा low rank adapter train हो गया होगा, फिर then we will create your images with this Okay. model. So let it complete 2% at least, and then we can move on. Okay, it is done 2%, Ron. So I think the low rank adapter is getting trained. Meanwhile, we will move on to the next one. Okay. Okay. So I think you can stop sharing. Yes, I will And stop sharing my screen uh-oh, and our guy is here, guys. ये I लाइक will. दुनिया में भाई सब चीज इतनी आगे बढ़ गई. ये लोग स्ट्रीमिंग की Okay, Rohan, डिफिकल्टीज नहीं फिक्स कर पा रहे हैं. आई you थिंक are. आई एम द होस्ट. नाउ आई थिंक एवरीथिंग इज गुड. शाहनवाज से सब सही चल रहा है भाई. आप अपना बताओ भाई, कहाँ से हो भाई? रोहन, कहाँ से हो आप? मैं तो हूँ पुणे से भाई. पुणे की और मैं वादियों हूँ से. पुणेरी मानुस, और मैं हूँ बैंगलोर. बैंगलोर से हूँ भाई. एक सेकेंड भाई. सब गायब हो गया, जो भी मैं करना चाह रहा था आ गया. ओके, इट्स ओके. चलो ठीक है. नो वरीज. आई थिंक हम यही कर रहे थे राइट, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू फाइन ट्यून फ्लक्स मॉडल ऑन माई इमेजेस. मेरे पास सबसे कम इमेजेस है अपनी लाइफ में, बट निसार भाई ने मुझे ही चूज किया. सो क्या ही कर सकते रोहन हैं. शेयर कर रहा है क्या स्क्रीन? मुझे कुछ दिख नहीं रहा. कर रहा हूँ भाई. शेयरिंग शेयरिंग दिख रहा है क्या? Where are you from? Where are you from, Shahnawaz? And where are you from, Shivai? ऐसा भाई दिख रहा है स्क्रीन? Yes, so we are done with creating Flux LoRa fine tune. It's right now at 3%, ये right? फर्स्ट We स्टेप हो will चुका come है back. राइट अभी. Yeah, we are done with the first step. We have done with all the steps, Rohan. हाँ Step हमने तो one, step two, अपलोड. step three. Yes, यस करेक्ट, हमने तो अपलोड भी कर दिया. And then we are yes, training will take some time, so we're gonna wait for it. So I think next topic पे जाते हैं right, which is very interesting. yes. Let's move on to the next topic. Um, So today we are going to test OpenAI O1 on some tough problems, and also we are going to try creating games. We know that Rohan O1 is really good at coding. तो आज Yes तो bro. देख ही लेते हैं हाँ, क्या है मुझे इसके कोडिंग स्किल्स. मुझे डर लग Yes, रहा है so ब्रो, इतना स्किलफुल हो गया ये. अब तुझे अपने स्किल से डर लग रहा है. यस. मैं कैसे उसको मैच करूंगा? कोई बात मेरी नहीं, कोई जॉब बात खतरे नहीं. में है. चलो, so ऐसा नहीं है. let's start जस्ट by किडिंग. building. Let's start by building the 3D game in हाँ Python, right? So let's go to ChatGPT and उससे chat ही करते हैं. चलो ठीक ब्रो. है, we will use the O1 preview model.
है क्या हमारे Chat पास with क्रेडिट्स? ChatGPT. आई थिंक तू बोला था ना कि वी We ओनली have हैव good amount. लिमिटेड क्रेडिट्स फॉर It इट. refreshes every week, and we have 30, so no one is using this model. So one thing about Rohan Preview is that you have to give prompts in a lot of detail, right? Correct. So let's start by giving a prompt in detail, right? So let's say, hey, I want to create a Python game. I want to create a Python game in 3D. Yes, Okay. 3D. And I want to create the snake game, the classic snake game. I want to create the classic snake game. Um, just to add some flavors to the prompt. Think step by step and give me. Let's add some flavors to the prompt. Think step by step. Give me the accurate code. And what else? Yeah, you can use any Python library, but the code should be in Python, right? No Yes. other thing. Okay. Do you want the snake to be in a particular color or anything? The Yeah, I snake want color it should be pink. pink. Baby pink, baby pink. You can use any Python library. Okay. So these are, so I think we can say that these are the specs we want for the snake game. Mm-hmm. For the snake game, snake snake color will be red. And it should Baby change pink. after it eats one of Baby pink. Okay. the snake color should change The after snake eating every goli. color should change Write after, it the same way, okay? after After eating every. goli. So are you testing this multi language Multilingual capabilities. multilingual Yes. capabilities? Okay. And step number 3, अच्छे से बना वरना पिटाई करूंगा. एक सेकेंड स्नेक कलर बैकग्राउंड should be Tricolor, black Indian tricolor. and be tri color with 10px border. Okay. That I don't know what is 10px. Okay, Rohan, that's all Okay, up to okay. you. It's fine. हाँ, लास्ट में क्या लिखना चाहता है बता तो. लास्ट में अच्छे से बना हाँ? वरना पिटाई करूंगा. अच्छे से बना. हो गया भाई. वरना करूंगा. Is it good? Let's go. Yes, let's go. चलो सर देखते हैं. हमने ओवन Let's प्रीव्यू मॉडल see. सेलेक्ट Model किया has है. started thinking, Ron. Model has started thinking. I'm getting excited. यही तो Evaluating मेरे को guidelines डर लग is रहा है जब वो थिंक करने लग जाता है. validating options. कितना टाइम लेगा लगता है थिंक करने को तेरे को? 20 सेकंड? It would take 20-25 seconds, I think so. Setting up the game. Okay. आ गया. देखते हैं. क्राफ्टिंग ए अभी और थोड़ा सोचेगा भाई, पाइथन थोड़ा और 3D सोचेगा. स्नेक गेम. हाँ वो सोच रहा है. मतलब इट्स इन प्रोसेस. स्टिल थिंकिंग. Oh, taking a lot of time to think, Ron. Let's भाई open the bar and see what ऐस, is thinking about. ऐसा क्या सोचने को बोल दिया भाई तूने इसको? He's saying that okay, I am thinking about the disallowed content policy code mid. Okay, evaluating. I am gathering info on Python library with a 3D snake game because हमने बोला है right So इसको. it's yeah, and we have to only use Python, so it's considering Panda 3D and it's considering PyOpenGL. Correct. Okay, so these few things he's considering. Then I'm opting for use Ursina engine, Rohan. This is something cool I have instead of no Pygame idea. because it is easy to use and ensuring suitable fit for a 3D snake game. Bye. तो उसने सबसे पहले बोला है हमको पिप इंस्टॉल मारना पड़ेगा उर्सिना. ओके. Yes, let's go and run this game, Rohan. ओके क्या ब्रो. दिया है उसने हमें? So let's go in terminal. I think everyone knows right that हमको एक अपना virtual environment activate करना होगा and then we can start installing pip. So we'll say pip install ursina. सेकंड्स तो देख भाई ने सारा सोच लिया उसने पूरा. 34 सेकंड तक सोचा. सोच तूने उससे कितना काम करवाया आज. बहुत काम करवा दिया. सो आई थिंक आधा मिनट तो सोचा है भाई और कितना काम करवाया. ज्यादा थोड़ी बोलते हैं इसको. correct. But I think it started by thinking that what is the base engine library that we're going to use, right? So अगर तो उसने उर्सिना बोला है and then it will give you the steps कि आप उसको import कैसे कर सकते हो and how you can use it inside your code. क्या लगता है 100% accurate रहेगा?
सो आई फर्स्ट मीन ही इज इसने गिविंग ऑल दिस स्टेप बाय स्टेप, एक कोड नहीं दिया क्या उसने, वन दिया कोड? लास्ट में दिया होगा, रुक जा भाई थोड़ा सा। ओके ओके, सो सो मेनी लेट्स, स्टेप्स। यस, फिर चलो उसने लेट्स कैसा, स्टार्ट। फिर उसने सबसे पहले इंपोर्ट्स लिए, फिर उसने एक ऐप क्रिएट किया, फिर बॉर्डरलेस होगा उसको क्या नहीं, टाइटल एंड ऑल दिस, ये ज्यादा रोहन, कॉम्प्लेक्स हो गया क्या? हाँ उसको बोलो एक एक कोड फाइल में दो, इतना दिमाग मत लगाओ। दिया होगा ब्रो उसको उसने बोल, लास्ट में, एक उसको सेकेंड। बोल एजीआई कही के एक कोड बेस में दिया दे। है, दिया है, दिया है, हियर इज द कंप्लीट ठीक है, कोड। सुन चलो तो ले चलो। भाई उसकी पूरी बात एटलीस्ट। तो वो बहुत ऐसा, बोलता है ये एजीआई। आई थिंक वो बताने की कोशिश कर रहा है कि व्हाट आर द स्टेप्स इट इज ट्राइंग टू टेक, राइट, एंड आई थिंक इट्स गुड कि समझ पाओगे हम लोग भी। स्टेप बाय स्टेप, बिकॉज वी टोल्ड इट टू गिव इट स्टेप बाय स्टेप रोहन, मतलब तुम हाँ, खुद ही बोलोगे तो कैसे चलेगा? बट आई थिंक इट्स गुड, राइट। सबसे पहले उसने लाइब्रेरीज यस, ली, फिर ऐप इनिशियलाइज, फिर उसने बैकग्राउंड फुल स्क्रीन होगा विंडो कि गेम नहीं सेटअप होगा, किया, विंडो गेम सेटअप किया, ये स्नेक का क्रिएटेड द स्नेक क्लास क्लास। बनाया, कलर वलर डाला, ऑरेंज येलो ब्लू रेड, यस ये हेड बनाया उसका, ये मूव फंक्शन लिखा, ग्रो भी बनाया हुआ है उसने, उसको पता है स्नेक यस गेम क्या यस, होता है, सो आई थिंक इट्स वेरी गुड। ये इनपुट्स डाला है, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, गुड, क्रिएट, ये क्या है, अच्छा फूड, जो क्रिएट द गोलियां फूड खाएगा। गुड, हाँ ही अंडरस्टूड रोहन, गोली। Yes, so I think it's good, right? Because he said that class 2 represent the goli that takes, that the snake eats. It's pretty cool. Sir, by multilingual capabilities तो चलती है. So I think this is actually the गोली class that it has created, but इसने गोली नाम नहीं दिया, food नाम दे दिया, but ठीक है. फिर setting up the background, हमने बोला था उसको background color देने को, positions देने को, and finally उसने गोम को initialize कर दिया, bro. समझा? And then we have यस, update function, and then we can run it. So it's a complete code. Let's see. So I'll copy this. लेट्स सी ब्रो, विल कॉपी दिस, वन शॉट में चला तो इट्स मैजिक ब्रो। Yes. अभी अपन डालेंगे, क्या डालेंगे, क्रिएट अ पाइथन snake.py, फाइल, nick.py, absolutely। and we'll paste everything. And then we'll say Python. Am I inside right folder? आई थिंक ऐप के अंदर जाना होगा, एसआरसी हाँ, ऐप, हाँ, यस। हाँ. Python. Snake.py. Come on, this all right works. Oh, oh. Food reference before assigning. No, Nisar bhai. GPT-4 प्रीव्यू अभी इतना भी खतरनाक नहीं है, पट गया अभी क्या, इसी को देते हैं। आई थिंक आई विल नॉट हाँ वेस्ट माय हाँ, टाइम। वी विल कॉपी पेस्ट एवरीथिंग एंड वी विल गिव इट टू देम ओनली। भाई सॉल्व कर, सो वन शॉट में वी वर नॉट एबल टू मेक दिस आई मॉडल थिंक डू वो दिस। फूड पोजीशन का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, एक सेकंड। हाँ हाँ, कुछ इतना सोचने नहीं, का क्या आई फायदा हुआ थिंक फिर? यहाँ पे कुछ तो हुआ है, फूड रेफरेंस, अनरिजॉल्व रेफरेंस। शायद उसने कंप्लीट कोड नहीं दिया है मेरे को। एक ये वो फूड भेज और ये भाई, बनाया था ना, ये फूड कहाँ गया भाई, इसने फूड वाला क्लास ही नहीं बनाया, फूड फूड ये रहा क्लास फूड। ले लेते चलो, मतलब बैकी बैकी बातें तो करता है कभी कभी ये। अपन एक फूड क्लास बना लेते हैं ऐप के अंदर, एंड आई हाँ हाँ, थिंक इट शुड वर्क फॉर क्लास अस। फूड है ना रोहन, क्लास फूड ऊपर दिखा मेरे को, हाँ, रैंडम, हाँ ये ना क्लास फूड एंटिटी टू यूजेजेस इज देयर। उसको भेजो, ये मैसेज भेजो, नहीं पहले तो चैट जीपीटी को भेजो ये मैसेज कि बेटा अच्छा तुमने पर ऐसी गलती कैसे की। अपन हाँ, आई गेव यू 34 seconds टू थिंक, राइट, देन व्हाई डिड यू मेक अ मिस्टेक? correct. So let's see that. I will just हाँ, paste this error and let it think. I think ये सारा वेल छोड़, प्लान। जो the way it has defined that food object, right? तूने गोली उसको ज्यादा दे दी लग रहा है मुझे। अरे मैंने कुछ नहीं दिया भाई, उसने वही खुद भाई समझा उसको कोड में बोली। गोलीबारी करने चला गया था, ले गोली। रीविजिटिंग वेरिएबल्स, भाई साहब आज तो एक भी एप्लीकेशन ढंग से चल नहीं रहा है रोहन। अंडरस्टैंडिंग द एरर। यस, स्निपेट कॉज दिस प्रॉब्लम, तो मुझे पता है। हाँ, सोल्यूशन ले लो, नहीं, आई व्हाई विल से दिस वर्क्स। अपडेटिंग अच्छा, अपडेट। अपडेटेड फुल कोड, रुक ठीक जा, है। पहले देखते हैं इसने क्या बोलना चाहता है, ठीक है। इसने क्या यस, बोला, द टू फिक्स द एरर यू नीड टू टेल पाइथन दैट यू इंटेंडेड टू यूज द, अच्छा, इंस्टेड ऑफ अपडेट मेथड ग्लोबल वेरिएबल एंड, बराबर बच्चे ने डिफाइन नहीं किया था भाई, इतना सोचने के बाद भी, कम ऑन। क्या कहें सर भाई, इस बार एरर नहीं लग रही है देख के, तो चल जाएगा। व्हाट डू यू थिंक? आई डोंट थिंक सो ब्रो, ये लेट्स थोड़ा गो। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ गेम कुछ तो ओवर, आया था। गेम ओवर हो गया भाई ये तो। इनकरेक्ट आरजीबी, नोन पाइप टाइप्स, चलो, फाटलं रे फाटलं। आई थिंक नाउ विल कॉपी दिस। आई थिंक हमने उसको गेम कॉम्प्लेक्स कर दिया, इसलिए उसको, अगर तू उसको बोलता हाँ कि लेट्स क्रिएट ए वेरी सिंपल गेम, मे बी
कर देता, बट वो बैकग्राउंड एंड इट ग्रोज एंड चेंज कलर, आई थिंक वहां अरे पे फंस गया है वो। क्यों भाई, क्यों एजीआई बोलते हैं इसको? कम ऑन सर एजीआई भाई, बाबू। माय जॉब इज सेफ नाउ। यस, योर जॉब इज प्रीटी मच सेफ रोहन। कॉपी पेस्ट करने के लिए कोई तो चाहिए ही। अरे कॉपी पेस्ट को भी कॉपी पेस्ट करने के लिए कुछ चाहिए, बट आई थिंक ये क्या गलत कर रहा है। तो मैं अरे दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं इसी से सॉल्व कर पाऊंगा आज हाँ, तो। फोकसिंग ऑन टाइम एक्सेस। भाई भाई तू कुछ ज्यादा ही सोचता है रे। पीएचडी नहीं लेने का इसलिए। क्या लगता है आज ये गेम बन पाएगा हमारा? आई डोंट नो ब्रो, आई एम ट्रस्टिंग ऑन इट। उसने बोला मैं 83% स्मार्ट हूँ कोडिंग बेंचमार्क्स में, तो मैं देखूँ तो सही कितना स्मार्ट है। यार स्नेक गेम नहीं बनाता वो, ये करता है डेटा स्ट्रक्चर सॉल्व करता है, तो उसको बोल बाइनरी ट्री को इन्वर्स कर देगा वो। अरे मुझे नहीं करवाना ना पर बाइनरी को इन्वर्स। किसी पेड़ को थॉट उल्टा फॉर देखा है क्या तूने? थॉट फॉर 57 seconds, it says that time dt value represents the time delta blah 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 solution to fix this। तो इसने अपडेट को चेंज किया है, ओके। स्नेक का अपडेट मेथड चेंज किया गया, मूव मेथड को भी चेंज किया गया, ग्लोबल अपडेट फुल कोड। चलो सर भाई फुल कोड आ गया है, लेट्स ट्राई अगेन। बहुत ज्यादा सोचता है रे, करता कुछ नहीं है। चलो अब तुम ही हो इसके दीवाने, मैं बोला था ये नहीं बनाएगा गेम, तुम बोल रहे थे कि गेम क्या सब कुछ बना देंगे। भाई ट्विटर पे सब लोग दावे कर रहे हैं, एवरीवन इज क्लेमिंग दैट इट डज दिस, इट डज कम दैट, सो आई ऑन वाज ब्रो, लाइक आज लेट्स ये डू इट मैगी मैन। नहीं तहलका मैगी बनाएगा। अरे हो रहा गेम है ये तो। ओवर। गेम ओवर कैसे हो रहा है, मैं तो कुछ चलाया ही नहीं, खुद ही खेल एटलीस्ट रहा है। एरोस दबा के जा तो सही कहीं, मतलब लेट्स ट्राई अरे एंड गोइंग पहुंच ही नहीं समवेयर। पा रहा हूँ ब्रो, क्या कुछ भी आया नहीं व्हाट देख इज दिस मैं। ब्लू स्क्रीन मैन? ये लगता है वो विंडोज अटैक चल रहा है यहाँ पे। मे बी आई नीड दिस टू ऐड समथिंग मोर, वन सेकंड। हाँ अच्छा, इसने क्या बोला? सैम को फोन कर, सैम को फोन कर। रुक रुक, इसने बोला था कॉल इन फॉर द मैक्सिफाइज एफपीएस चेंज कर देता हूँ ऐप। एडिशनल रिकमेंडेशंस। ओके लेट्स गो फॉर इट, ये बोल रहा था उस टाइम, मैंने किया नहीं था, मे बी ओके रेजोल्यूशन का प्रॉब्लम आया। और इसने बोला इनिशियलाइज। ओके, इट्स टेलिंग टू इनिशियलाइज सेल्फ डॉट टाइमर स्पीड इन स्नेक क्लास। ओके, सेल्फ डॉट टाइमर इक्वल सेल्फ डॉट स्पीड। टाइमर और क्लास में जाना है, इसमें हाँ। बोल रहा स्नेक है एंटिटी में कि सेल्फ डॉट टाइमर को अपन डाल देंगे। डिले द फर्स्ट मूव, दैट्स व्हाट इट्स सेइंग। वही तो नहीं हो रहा, फर्स्ट मूव ही नहीं हो रहा भाई, तू ट्विटर पे कुछ भी पढ़ के मेरे को परेशान करता रहता है। अरे फर्स्ट अभी मूवर देखूंगा। एडवांटेज है भाई। अरे फट गया भाई, फट गया। एक सेकंड, स्नेक हैज नो एट्रीब्यूट स्पीड। एक काम करते हैं रोहन, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। दिस चैट जीपीटी O1 आई थिंक इज अ बिग स्कैम एज वेल, जस्ट लाइक रिफ्लेक्शन 70B। आई थिंक आई हैव माय डाउट्स ऑन दिस आ AGI गया। थिंगी। आई थिंक आता है बट वो गेम ओवर हो जाता है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? हेड पोजीशन, जमीन में तो घुस नहीं जा रहा, 3D तो दिख नहीं रहा है मुझे कुछ। वन सेक, आई विल ट्राई विथ एक बेसिक गेम बनाऊंगा, फिर थ्री डी यस, बनाऊंगा, ठीक है? लेट्स स्टार्ट विथ इतना स्नेक थ्री डी बेसिक। नहीं बनाऊंगा मैं। इसका पहले वाला जो प्रॉम्प्ट लिखा था वही कॉपी करूंगा, बिकॉज यू नो आई एम 3D वेरी ना हो लेजी। पाई, 3D ना हो पाई। इससे नहीं हो पाएगा। यस यस अपन सिंपल लेंगे, ठीक है? I, hey, I want to create a Python game, no यस, 3D. दैट्स I इट। want to create the classic snake game. Think step by step and give me the accurate code. You can use any Python library. These are the specs we want for. नहीं, specs भी हटा देते हैं भाई, यही रहने देते हैं। हाँ ये भी हटा देते हैं, ये सब इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा शायद। हम बोलते हैं कि स्नेक का कलर बेबी पिंक होना चाहिए और स्नेक कलर चेंज होना चाहिए आफ्टर ईटिंग एवरी गोली और एवरी फूड। मे बी मल्टीलिंगुअल कैपेसिटीज को अच्छे से समझ नहीं रहा, अच्छे से बनाना वरना पिटाई करूंगा, doesn't seems to work well, so we'll remove it and let's see what it will give us this time। क्लासिकल चल रहा है क्या? Setting up the game, हाँ? crafting the color palette, setting up initial parameters. निसार What भाई मेरा else? फोन ही Crafting नहीं आ the रहा ब्रो, तो आ 10 भी जाएगा बजने ब्रो। वाले हैं भाई, फोन ही गायब हो गया है। अरे मतलब आज ही आने वाला है क्या? हाँ क्या मतलब मेरा फोन रिस्टार्ट हो जा रहा है भाई, आज ही आने वाला है और आ आ ही नहीं रहा जाएगा। है, सुबह से आउट ऑफ डिलीवरी है वो। तो दिस टाइम इट्स पिक्ड अप पाई गेम, ठीक है। ओह फाइनली। आई गेम आई थिंक ये चला लेगा, क्योंकि आई थिंक हमने 3D में चले गए थे ना, तो मे बी वो ज्यादा ही Yeah. कॉम्प्लिकेटेड कर दिया सर। तो इफ इट इज यूजिंग पाई गेम्स देन आई थिंक इट शुड वर्क, इट हैज
गिवन दिस कलर्स, देन फिर ये स्पीड ले रहा है, स्नेक का बॉडी ले रहा है, इनिशियल पोजीशन सेट किया उसने, फुट पोजीशन बनाया है रैंडमाइज करके, एंड नाउ इट विल मूव। ऐसा लुक्स लाइक दिस टाइम इट शुड वर्क फॉर अस। This time I think the Python game will work. जैसे आई थिंक तो Pygame सबसे install पहले करना है. हमको पाई गेम लेना पड़ेगा, क्योंकि ये वाले में मैंने Mhm. नहीं डाला है पाई गेम। स्टार्ट विद पाई Mhm. गेम। पाई गेम्स। क्या निसार भाई, मैं सोचा था अभी मैं प्ले स्टोर पे भी लॉन्च करके थोड़ा पैसे कमा लूंगा। हमारा तो गेम Mhm. पीसी में ही नहीं चालू हो रहा है। बुलाओ AGI बोलते हैं इसको, AGI. उस पेपर बॉय को बुलाओ ब्रो। कहाँ है वो पेपर बॉय? प्रतीक से पूछेंगे ये सब क्यों इश्यूज हो रहे हैं भाई. हाँ. पेपर बॉय को बुलाओ। आई गॉट आंसर। ठीक है, तो आई थिंक पाई गेम आई एम 100% तो नहीं, बट 90% श्योर चल जाएगा। लेट्स Let's स्टार्ट। see. आ गया, Oh, आ we गया। have the snake. अरे It's सबसे baby pink, इजी, Rohan. इस हाँ इसने इससे सबसे इजी लाइब्रेरी यूज किया ना, इसलिए पिछली बार वो चलो चलो. 3D ओहो. वो माया वाया के कंपटीशन चला गया था। नाइस। आई कलर वाज चेंज किया है फाइनली उसने. फाइनली एबल टू ना उसने मैं Rohan, you ओ just scored 20, man. थोड़ा साफ तो बड़ा कर. यस आई थिंक Let's try यहाँ again. से इसने लिया, इसने कलर ये वाला कलर लिया है। कलर पैलेट ये है. तो ये कलर पैलेट से वो रैंडमाइज कर रहा होगा नीचे। दैट हम्म. वर्क्स। आई थिंक एक और बार गेम खेलूंगा मैं। एक और फुल बार स्क्रीन में खेलेंगे और इस खेलूंगा बार क्या? लेट्स गेट गुड स्कोर्स मैन. नो फुल स्क्रीन इज अवेलेबल. गया मर गया. अरे सॉरी, अरे हाँ हमने वो बैकग्राउंड वो नहीं दिया ना, विंडोज के फंक्शंस नहीं उसके। ठीक हो मैंने। अभी ओके. अपन बड़े बनेंगे। क्या निसार यस. भाई बचपन में खेलता था यार नोकिया 1100 में? यस. अरे दे दे, अरे आ गया। वाओ। रेड कलर. रेड। इस बार कौन सा कलर आएगा? गेस कर निसार जल्दी। ब्लू। ग्रीन कलर. ये तो चल रहा है भाई, गेम तो बन गया। कुछ और बोलना है क्या उसको ऐड करने को? एक्स्ट्रा एक हेड। मेरे को ये टेस्ट करना है कि खुद की पूंछ काटने पे क्या करता है वो. मर व्हाट डज जाएगा। इट डू व्हेन ही कट्स हिज देखते हैं ओन. देखते हैं पहले. देखते हैं। हाँ हाँ, पहले थोड़ा बड़ा कर सांप को. भाई बहुत डिफिकल्ट है ये। करो करो. अरे क्या हो रहा है भाई, ये मिस जरूरी ही हो है. जा रहा है। अरे अरे अरे. रोहन क्या कर रहे हो भाई तुम. भाई यार, ये शायद ना एग्जैक्ट वो पिक्सल पे नहीं। बेइज्जती करवा रहा है तू. फाइनली। हाँ. ये लो। वो फोन जैसा नहीं घूमता है। हाँ. एक और बना के खुद की पूंछ काटनी है हमें. नहीं यार, एक दो और करूंगा इसको। अरे धीमे धीमे. मैं दी। सायन कलर इन द हाउस. अरे अरे अरे। यस। मर गया मैं। This also works, man. This also works. सो आई थिंक फाइनली इट वर्क्स, बट हाँ बेसिक उसने बिकॉज इट इट यूजेस पाई गेम, सो पाई गेम में तो पता ही है बहुत आसान होता है बनाना, बट इट्स प्रीटी कूल। So we can say, Rohan, that it can make basic simple games, but जब बड़ी बड़ी गेम्स की बात आती है, you know, 3D environments, all that, वो अभी it is not capable. It is not going to be capable soon enough also. So game developers, coders, you're all good, man. Good to go. Don't worry. या तो हमें एक दो और टेस्ट करना चाहिए। देखते हैं कभी हम So we will test it later on, right? Let's start with some other questions. If you have any other questions, क्या पूछेंगे रोहन? तू ही बता क्या पूछना चाहेगा। कुछ और ऐड उसको करना ही है क्या? पूछते हैं. हाउ कैन आई मेक दिस गेम मोर इंटरेक्टिव? पूछू क्या? Yeah, make this game more beautiful, and मेक दिस गेम मोर। I want vada pav instead of goli. Vada pav. बड़ा पाव एनिमेशन नहीं ला पाएगा। I want some you know, Indian food instead of. चल ना बोलने तो दे. आई वड़ा पाव और वांट some Indian food. हाँ लिख दे. वड़ा पाव इंस्टेड ऑफ गोली। बट आई थिंक इट विल नॉट वर्क बिकॉज ये 2D आई मीन 2D एनिमेशन है ना, तो वड़ा पाव कैसे बनाएगा भाई वो 2D में? I don't know, bro. वो बोलेगा कुछ तो मेरे को रैंडम लाइब्रेरी इंस्टॉल करने भी देख। देखते हैं. Let's see, let's see. ओह सर्टेनली 12 सेकंड्स में उसने सोच लिया भाई। Replace यूज food with एन vada pav image. यूज एन इमेज। चलो ठीक है भाई, पूरा कोड दे दो, मैं इमेज डाउनलोड करता हूँ। वड़ा पाव इमेज। समझ गया मेरे को ये क्या कर रहा है। ठीक है, बट नाइस Vada pav आइडिया। PNG. वड़ा पाव पीएनजी। तो एक ये वाला सिंगल वड़ा पाव ले.
हाँ। पीएनजी का काफी स्कैम रहता है। स्कैम तो हर जगह है ब्रो। चल यही वो ले लेते हैं। डाउनलोड करके, हाँ डाउनलोड कर सेव ले, उसके बाद इमेजेस, अपन डाउनलोड, बैकग्राउंड रिमूव में सेव। जाना पड़ेगा। पीजी रिमूव कर देते हैं। कूल। ये तो मेरा फेवरेट साइट था एक टाइम पे। ऐसा लग रिमूविंग रहा था। बैकग्राउंड्स लाइक अ प्रो। यस, मैं लगता था कि बैकग्राउंड ही रिमूव करता था। ये बहुत अच्छा साइट है, बट इट इज वन ऑफ द बेस्ट साइट आई हैव यूज्ड। रिमूव पीजी। डाउनलोड। ठीक है। चलो, नाउ वी हैव द वड़ा पाव पीएनजी, नाउ व्हाट वन? एक मिनट ना, पहले पीएनजी को रीनेम कर लेता हूँ। इतना बड़ा नाम नहीं लिखूंगा वहां पे मैं। अरे डिलीट कर दिया तूने? ओह। रीनेम, आई थिंक संडे का इफेक्ट चल रहा है। वड़ा पाव, ठीक है। यस। और हम उसको क्या करते हैं, एक और चीज। इस वड़ा पाव को हम यहाँ ले आते हैं। हम्म। ये रहा, पीएनजी आ गया। कुल। ओके। ओ वाओ। अरे सर अरे, भाई, खाने का मन कर रहा है ये ब्रो। तो भूख लग गई बड़ा पाव देख के। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप बोला उसने कि कहाँ है? हाँ। फर्स्ट स्टेप उसने बोला था कि मेरे को वड़ा पाव का इमेज ला के दो, और फिर नीचे कहीं रेफरेंस दिया रहेगा उसने उसका बेस, राइट। यस। So लेट्स कॉपी food दिस with न्यू वड़ा कोड आई पाव, गेस। add a background image, improve appearance। तो देख, इसने निसार बोला कि गेम अच्छा होने के लिए आपको तीन चार चीज करना हम्म। चाहिए। बैकग्राउंड अच्छा बनाना चाहिए, स्नेक को अच्छा दिखना चाहिए, थोड़ा सा ब्यूटी मेकअप क्रीम ऐड लगा के। साउंड इफेक्ट्स। ये कहाँ से लाऊंगा भाई मैं? ठीक है। अपडेटेड कोड दिया है उसने। लेट्स चलो, सी। तो ये हटा गया। अभी उसने ये कहाँ डिफाइन किया है मेरा पाथ? पाव वड़ा पाव सर्च कर कोड ये में। रहा, वड़ा पाव डॉट पीएनजी। अपना डब्लू है। अरे कर देता हूँ रीनेम। और डब्लूज फैक्टर। डब्लूज वाले वड़ा पाव खाते हैं हम। जब ब्लूज वाले वड़ा पाव खाते हैं। चल हो गया, आई थिंक इट्स ऑन द सेम लेवल, राइट? नहीं, यहाँ पे होना चाहिए। Cool. क्या लगता है सर लुक्स भाई? गुड। बैकग्राउंड इमेज भी चाहिए होगा रोन, इट हैज अ बैकग्राउंड डॉट जेपेग। डू यू हैव एनी स्पेयर इमेजेस? I will download गिव it, bro. मी। Generate. वी कैन जनरेट इट विद डाली ओनली। गो लेट्स गो टू डाली एंड जनरेट इट। थोड़ा कूल हाँ, बनते हैं भाई। जीपीटी 4 से ही करवा लेते हैं ना। जीपीटी 4 से करवाएंगे। एक नया थ्रेड लेंगे। क्रिएट से प्रीव्यू वाला नहीं करता है, प्रीव्यू वाला नहीं करता जनरेट है। प्रॉम्प्ट लिख लेता हूँ, जनरेट मी अरे है। वो प्रॉम्प्ट की जरूरत नहीं है, जस्ट गो टू जीपीटी 4 हो एंड क्रिएट इट। जनरेट बैकग्राउंड background फॉर for स्नेक गेम। my snake game। लेट्स कीप इट डार्क। डार्क का तो पता नहीं भाई, डार्क होगा कि नहीं। अरे अरे भाई, इतना। बहकी बहकी बातें कर रहा है तो ब्रो। भाई हाँ इमेज। यस यस, अरे नहीं नहीं कर रहा है, वो कर रहा है। वुड यू लाइक टू जनरेट एन इमेज फॉर दिस? यस। मेरे को लगा था ऊपर इमेज नहीं लिखा ना, इसलिए शायद वो कंफ्यूज हो गया। क्या लगता है सर भाई? इतनी अच्छी क्वालिटी में देगा वो हमको इमेज? देखते हैं। अच्छी क्वालिटी तो अच्छी रहेगी, बट कितना डिस्ट्रैक्शन रहेगा उसमें वो पता आई थिंक सोचेगा भाई वो अभी। है। अरे भाई उसने तो पहले से ही नहीं स्नेक बना के दे दिया। हो पाएगा भाई इससे। चलो ठीक आई थिंक मैं खुद ढूंढूंगा। है। हाँ हाँ, ये रहा ना मारियो वाला, उठा ले कुछ। यही उठा लेता हूँ। इवन दिस वन इज गुड वन, द फोर्थ वन, फिफ्थ वन, फिफ्थ दिस वन, वन। फिफ्थ वन। गेट ऑन इट। ऑप्शन, सेव इमेजेस, विल गो टू डाउनलोड्स। अरे अदानी चचा भी व्हाट इज है। अदानी? भाई ये सॉरी क्या, मोदी वो जी। भाई ये जेपैग फाइल है, जीपी इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बाद में। अरे जेपेग इमेज ही तो है, जी अच्छा जीएफएफ। जीएफआईएफ है। तो जीआईएफ, अजीब तो गरीब लोग आ रहे हैं भाई। जीएफ आईएफ इमेज टू पीएनजी। यप। लेट्स गो। फाइल, बैकग्राउंड टू पीएनजी कन्वर्ट। ओके, लेट्स सी। मेहनत के बाद कुछ होने भी वाला है क्या रोहन, कि चैट जीपीटी उल्लू बना रहा है? भाई उसने देख बेसिक गेम तो अच्छा बनाया था, पूरा 3D में बेचारा परेशान हो गया था, समझ रहा है। बट उसको फ्री देते में हैं तो थोड़ा टाइम। इंसान भी परेशान हो जाते हैं। एक आ गया समझ हमारे गया मैं। पास बैकग्राउंड इमेज सर भाई। सो नाउ वी हैव बैकग्राउंड डॉट पीएनजी, विल गोना सेव इट, विल कम हियर। अब अपन डाउनलोड में जाते हैं। वहाँ पे इमेज आना चाहिए, राइट मेरा? ये रहा। ऐप,
सेम ही नाम है ना? नहीं, जेपैग है। जेपीजी है भाई, रीनेम कर दे। रिफैक्टर रीनेम, ये कौन सा आईडी है? ये बाय चार्म। हाँ, चलो, सो आई थिंक लेट्स सी, सच का सामना इसका करेंगे। सामना। ओह माय वो गॉड! वड़ा पाव किधर है बट? अच्छा ये रहा। वड़ा पाव इतना छोटा दिख ही नहीं रहा, दिखाता वड़ा पाव है। ये तो ये रहा। किधर है? अरे है ब्रो, समझ गया वो है। चैट जीपीटी को बड़ा पाव बड़ा करे। ये रहा, इतना छोटा वड़ा पाव है ना भाई। अरे अरे वो वड़ा पाव पार नहीं पर खा। हो गया। चैट I'm- जीपीटी के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं भाई। क्या कि मैं वड़ा पाव नहीं खा पा रहा हूँ? हाँ, उसके बाद मैं वड़ा पाव नहीं खा पा रहा हूँ और वड़ा पाव का साइज बड़ा कर, ये दो चीजें कर। ठीक है। ये क्या मजाक कर रहा है? गेम रहा तो काफी डिफिकल्ट होता जा रहा है निसार भाई। अरे ठीक है ब्रो, बनाएंगे और क्या, काम ही क्या है अपने तो को। मैं वड़ा पाव नहीं खा पा रहा हूँ। रहा हूँ और वड़ा पाव बड़ा कर। और और दिख भी नहीं रहा है वो। वड़ा पाव इतना भी यार, ये तो मतलब चेन ऑफ थॉट की तूने ले ली है, ऐसे कौन लिखता है? यही नहीं है भाई, ये यही था क्या वो? अच्छा, वन यही प्रीव्यू है, है। यही है, मैं आया हूँ दूसरे में, ऑन प्रीव्यू ही ओके है। ओके, अच्छा। हम्म, चल देखते क्या बोलता है। सो जस्ट इन गेम एडजस्टिंग, डायनामिक्स। कुछ तो करेगा, सोचेगा, इसने सोचा है, आइडेंटिफाई द इशू। बहुत सोच रहा है भाई, The बहुत। user is the user is experiencing an issue when the snake is in the game isn't recognizing the vada pav as eaten, and they also want the vada pav to be larger. Yeah bro, chain of यस, thought के prompts तो अच्छे बनाता है वो। तो कुछ एक्चुअली तो में सही मॉडल, डायरेक्शन में हाँ, रहा है। सोच तो पाता है। गुड। थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन। करेक्ट। आई एम सॉरी टू हियर दिस निसार भाई। क्या है तेरे को उसने नया नवेला कोड? Okay, we'll try this one more time, Rohan, and then we will move on to understanding strawberry architecture, या right? We'll आई थिंक bring in बहुत our गेम paper बना boy लिया ब्रो। Pratik. We'll bring in paper boy Pratik. We'll do some serious talk about how strawberry works, what is the strawberry architecture, how we have trained it, how they have fine-tuned it, what is reinforcement learning, all that technical stuff. टफ टास्क, Yes, नॉट लाइक we'll talk कॉपी about it. पेस्टिंग। अभी तो मैं कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ, कहाँ है भाई? I think it's done. क्या अभी और कुछ करना है क्या? एक सेकंड, वड़ा पाव डॉट पीएनजी बैकग्राउंड डॉट पीएनजी। PNG करना है, yes. भाई वो मेरे को वड़ा पाव छोटा भी चलेगा चलेगा, मैं सोचूंगा कि आज मेरा पेट भर गया। बट वो खाए तो सही एटलीस्ट। ए वड़ा पाव बड़ा देख, हो वड़ा गया पाव है। बड़ा तो है। ओ खाया रे? चल, खाया वड़ा पाव इज लाइव दिस आर भाई, फाइनली स्नैक अब ईटिंग वड़ा पाव। फाइनली आई थिंक बेसिक स्नैक गेम्स ईटिंग बना वड़ा लेता है। पाव। कूल। ओहो, खाते रहे भाई, बड़ा पाव खा ले और खत्म कर अपनी डेली कैलोरीज आज ही। दिख ही नहीं रहा था मुझे, इतना गंदा वो कलर हो गया था। खाना क्यों नहीं खाता है? एक और बार खेलेंगे रोहन, एक और बार खेलेंगे। एक और बार, कम ऑन, नहीं ब्रो, इट्स टू मच। So this is snake and vada pav game which is done for us. यूजिंग जीपीटी 4 हो, Yes. उसने This बना was लिया। GPT O1 preview. Yeah, सॉरी, O1 हाँ preview सॉरी, we did. जीपीटी ओवर, बट आई थिंक थोड़ा मेहनत करेगा तो मे बी 3D तक भी बना लेगा ये। रोहन, 100 का स्कोर तो चाहिए, ठीक है? 10 वड़ा पाव खाने पड़ेंगे। भाई अरे भाई अरे भाई, अरे 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 शिट अरे। ब्रो, मेरे को लगा टकराने को बोलने वाला है तू। चल एक और टाइम, एक और लास्ट अटेम्प्ट। कम फाइन है। ऑन, लेट्स डू अ मुझे 100। लगता है विंडोज का साइज बढ़ाना चाहिए, डिफॉल्ट साइज, तो मैं कर अरे ठीक है पाऊंगा। ब्रो, वड़ा पाव खाना जरूरी। रोहित शर्मा से सीख के आ रहा है क्या तू? आज का मैच देखा क्या, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश? नहीं भाई, मैं क्रिकेट से बहुत दूर हूँ। जितना मैं बड़ा पाव से दूर है मेरा स्नेक। ओके, 70 पहुंच गया हूँ वन, वी मैं। आर 73 टू गो, 2 टू गो। 80। चल आज 100 तो, पार कर दे। अरे यार, पुणे में दिया उसने, टफ है ओ भाई काल। भाई भाई भाई, दिख ही नहीं रहा, अरे दिख ही नहीं रहा ब्रो, क्या ये? अरे बच गया ब्रो, क्या ट्रिक था वो। डिफिकल्टी लेवल था ब्रो ये तो। चल बैकग्राउंड अभी में अभी ही मेरा स्नेक लेट्स मेक इट बेचारा टिल गुम हो गया 150, था। लेट्स मेक इट 150। ब्लैक ना हो बस। आई थिंक बैकग्राउंड सिलेक्शन इज, और जो कलर जो हमने रैंडमाइज किया उसको ठीक करना चाहिए अगर। 190 पे होगा, 190 पे होगा, देखना काला। देख अबे ऐसा नहीं हो सकता है, उसने मैं तो रैंडम यूज किया होगा। अब देख तू। अबे अबे काले, ये तो चीप ट्रिक कोडिंग यूज किया उसने, पोजीशन 0 1 2 3 फॉर लूप। अच्छा आई थिंक ये तो मैं हाईएस्ट स्कोर बन गया आज, मर जा।
एंड ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड रोहन। चलो अभी जितना हो सके उतना साफ बन जाओ। और फिर अपन पेपर बॉय को बुला ले। पेपर बॉय आ गया है क्या हमारा? तब तक मैं गेम खेलता हूँ। डू वी हैव पेपर बॉय? पेपर बॉय, कहाँ है मेरा पेपर बॉय? को तो बुलाओ। पेजिंग फॉर पेपर बॉय। पेपर बॉय इज पेजिंग। हियर। ओह, मर जाऊँ मैं फिर? ले, मर वाच में। गया। यस, अरे 320 इज माय हाई स्कोर। गुड जॉब रोहन, गुड जॉब। मैं एक पैट सेकंड आया, योरसेल्फ ठीक ऑन द है? बैक। मैं कोई पानी लेकर के, तब तक आप पेपर बॉय के साथ बातचीत कीजिए। आया पेपर बॉय। यस पेपर रोहन, यू कैन बॉय। टेक अ शॉर्ट ब्रेक। पेपर बॉय दिख नहीं रहा है मेरे को भाई वीडियो पे। यस यस, तुझे वो सेटिंग ऑन करना पड़ेगा। अरे नहीं, जूम के वीडियो पे खुद नहीं दिख रहा है। उसको आएगा तो आएगा बहुत आएगा। पहले चालू करना है। ठीक है, आई थिंक नसार यू कैन स्पेंड 2-3 मिनट्स मे स्क्रीन बी। तो शेयर कर, हाँ, स्क्रीन तो स्क्रीन तो शेयर। शेयरिंग ही है। अरे मतलब स्लाइड हाँ हाँ दिखा, हाँ हाँ हाँ। ठीक है दिखा। यस यस। 1 मिनट। तो प्रतीक भाई कैसे हो? वी हैव पेपर बॉय प्रतीक इन द हाउस, इवन पेपर बॉय इज विजिबल और नॉट? हाँ, कर देता हूँ भाई। वो पेपर बॉय खुद ही गायब हो गया था, मैं क्या करूँ? आ गया है अच्छा पेपर अच्छा। बॉय एकदम मस्त। So I'll be back in two इस पेपर minutes. बॉय, ओके, टिल द टाइम रोहन इज गॉन, आई विल टॉक टू प्रतीक। प्रतीक क्या हाल चाल, कैसा है भाई? सब चल रहा है निसार भाई, आप बताओ। Yeah, paper boy Pratik is here to explain us the strawberry architecture। मैं क्या संडे को? कुछ नहीं, खाया पिया, फिर आज थोड़ा तो सा है। सोया। यस। ये तुम सारे इंजीनियर्स क्या कर रहे हो भाई? खाया पिया सोया, पता नहीं खाया स्कैम पिया चल रहा सोया। है, मजदूरी तो करवाते हैं तुम सबकी मंडे शादियां से लेके करवानी पड़ेगी सैटरडे। भाई। तुम सबकी शादियां करवानी पड़ेगी, तब जाके तुम लाइन पे आओगे। नहीं भैया, जैसे है ठीक है, अभी क्या शादी, अभी तो सो कच्ची प्रतीक, उम्र है। एक्सप्लेन क्या करने वाले हैं हम? हाउ आर वी गोइंग टू अंडरस्टैंड द स्ट्रॉबेरी आर्किटेक्चर? व्हाट इज स्ट्रॉबेरी सो आर्किटेक्चर, थोड़ा हमें बताइए। आज बेसिकली हम 3 पेपर पे डिस्कस करने वाले हैं। And एक बंदा है ऊपो बोल के, जो बेसिकली हम्म मतलब पीएचडी कर रहा है बंदा, और वो पेपर्स के बारे में बहुत अच्छे से मतलब पढ़ के कुछ समझता है, दूसरों को समझाता है। सो हम्म स्ट्रॉबेरी के लिए मतलब बोल रहे हैं कि देयर आर फ्यू पेपर्स व्हिच हैव बीन पब्लिश्ड इन द मंथ August 2024, September 2024, and they हम्म have been targeting reasoning, chain of thought, preference, TPO, like direct preference optimization in the learning framework. हम्म तो हम आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि पहले से कैसा वो थोड़ा डिफरेंट है, एंड हाउ यूजिंग दीज मेथड्स रीजनिंग इम्प्रूव हो रहा है, और सर ऐसे भाई। रीजनिंग मॉडल अच्छा बन रहा है। तो these will ओके, be the so we are going to understand the strawberry architecture, then we'll understand how it is trained. We'll try to understand how it is trained. Nobody knows what has happened behind the scenes at OpenAI, but we are going yes. to understand it from the breadcrumbs that are spread everywhere in the internet. We are also going to see how it is trained, what is the chain of thought doing here, how it is fine-tuned, what is the data here, where they are using reinforcement learning, and how this synthetic data was made. So Rohan, let's open that link, HupoDocs, Like bro, I'm and we'll back. have to. Hey, hi Rohan, welcome back. We चलो। have Pratik with us. हे Paper boy हाय Pratik. प्रतीक। आ गया क्या तू रोहन पेपर भाई, बॉय ब्रो? कितने पेपर पढ़ा Yes, आज तूने yes. सुबह से, बता। देखा क्या मैंने गेम बनाया आज? हाँ आज सही था मैं वो वड़ा लॉन्च गेम, कर पाव, दूंगा। वड़ा वड़ा पाव पाव. वाला, बड़ा। यस। और खुद हाई स्कोर भी बनाया मैंने उस बड़ा पाव गेम में। चलो। आई थिंक वी विल स्टार्ट विथ आवर आर्काइव फॉर। Yeah, we'll open all the links, Rohan. या 1 second। Yes. So this is the GitHub repo of what Pratik was talking about, the Hoopo guy. He's a really an great guy, does research, postmortems of every paper, almost all latest research. So a good recommended channel to subscribe for AI research. Let's open all the links because we are regular followers of him, so we also get all the latest AI researches from him only. तो हुपो माता की जय हो। करेक्ट, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट पेपर। यस। राइट। उपो माता की जय के साथ। Off to you, Pratik. ओके, Please go सो ahead. बेसिकली the paper building math agents with multi-turn iterative preference learning. We basically explore करता है कि how we can use various thinking methods to like improve our current reasoning models. So अभी क्या होता है, while Mhm, like all current models are focusing on supervised fine tuning models and using synthetic data, while in this paper, they have been trying to emphasize more on DPO, which is direct preference optimization, but with a twist, which is actually using multi-turn chat window. So basically, पहले जो था वो single turn chat था, and they could not like
think a lot, but this model has various chain of thought reasoning methods where they reiterate on those and basically have better reasoning proficiency. So अभी के लिए like the key contributions in this paper are basically कि उन्होंने एक optimization method use किया जिसके बारे में मैंने बोला DPO, and they also use another method which is kernelized trust optimization which is KTO. मतलब उसका basic meaning ये है कि rather than converging to a single input, creativity बढ़ा के हम divergence बढ़ाते हैं and we can create way too many steps. तो basically होता क्या है कि मान लो आपके पास बहुत सारे सैंपल्स है, लेट्स से देयर आर 100 सैंपल्स दैट हैव बीन जनरेटेड, एंड उसमें से 10 अच्छे सैंपल्स हम देखते हैं एंड उनके बीच में से फिल्टरिंग करते हैं. इट्स नॉट लाइक कि हमारा आंसर एक्यूरेट होना चाहिए इस स्टेप पे, बट ऑल द रीजनिंग स्टेप्स शुड बी लाइक कि हाँ ये ऑलमोस्ट आंसर के लाइक पास था, लाइक इट वाज नियर अबाउट द आंसर. उसके कितने मतलब उसका रीजनिंग Okay. कितना डिटेल्ड है, कितना अच्छा है. So So what we are and they trying have to also do here okay. is that when you give it to LLM, it will generate, let's say, 20 different responses, and then on those 20 different responses, we are running a DPO. We are preference Yes. optimizing, let's say, two examples, two outputs which were Okay. good enough, and then that is getting used. Is that what we are doing? Yeah. तो अभी हम मतलब वेरियस स्टेजेस के लिए हम क्या कर, मान लो हमारे लाइक वी हैव अ सिनेरियो एंड वी आर ट्राइंग टू सॉल्व अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम. तो उसके Mm-hmm. लिए एक प्रॉब्लम हम सॉल्व कैसे करते हैं, लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग टू बिग लाइक टू एंड. तो आंसर तो सबके पास होता है, लाइक प्रीवियस मॉडल्स basically had data sets where they had reasoning steps and just the correct answer, but just like instead of using just the correct answer, you're focusing more on the steps that got to the correct answer. And apart from this, they have also used tool, like they have integrated tools which are like Python interpreters and basically other tools for mathematical reasoning. Again, like Hmm. for benchmarking and other stuff. तो इनका performance like उन्होंने try किया था Gemma 1.1 97B per like billion parameter model पे, और एक Mm-hmm. उन्होंने use किया था अपने Gemma 2 89 billion parameter model, and the data sets that they tried on is basically GSM 8K and the MAT data set. So previous models say there Okay. have been like a small amount of improvement. It's not small basically, but देखा जाए तो बहुत अच्छा है. लाइक 77 से उन्होंने जंप Hmm. किया 83 पे, और मैट डेटा सेट पे इट्स लाइक फ्रॉम 46 to 51. And similarly Right. for the Hmm. 9 billion parameter model, it's from 84 to 86, and for the match data set it's from 51 to 50, 54.5. Hmm. So what I can see is that it increased the performance of the smaller model. 7B का Yes, performance बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया. It did not yes, affect the 9 billion that much. 84 to 86 was nothing. Right. This is cool, yeah, man. This is cool. So this is one of the researches. Basically, yeah, यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि we are generating a lot of examples from the LLM and then choosing few of them and keeping them for DPO training. Okay, Yeah. let's keep this idea, park this idea, Rohan. I क्या think बोलते जो हो? yeah, तुमने बोला and what I can understand is that we're gonna find all those steps that leads to the correct answer, and then we're yes, gonna segregate it, and then we're gonna use those specific data sets to do our next iteration runs or maybe do the training, correct? तो पहले कैसा exactly. होता था कि हम सिर्फ डेटा देते थे और कुछ हम ये नहीं देखते थे कि वेदर स्टेप्स या कन्वर्ज कैसे हो रहा है. सो दिस इज व्हाट इट इज डूइंग, राइट? इज इट करेक्ट, प्रतीक भाई? Yes, Okay, so should we go to the next paper? sure. Definitely. It says scaling LLM test time compute. Yeah, so this paper basically titled as Scaling LLM Test Time Compute Optimally Can Be More Effective Than Scaling Model Parameters. तो इस पेपर को पढ़ने के बाद मुझे जितना बेसिक समझ आया, इसका मतलब ये है कि लाइक rather than increasing the parameter size of the module, मतलब model, we can actually like go for like increasing the test time compute. मतलब हमको उसको थोड़ा समझने के लिए या सोचने के लिए थोड़ा टाइम दे, will be included in that compute, like which is basically while inferencing it, and it has resulted in better efficiency and better responses. So अभी ये लोग क्या कर रहे हैं कि like simple to intermediate prompts के लिए test time compute बढ़ाना is more efficient and effective, whereas for more complex prompts model parameter बढ़ाना effective है. तो इस study पे basically उन्होंने अभी ये present किया है. And so for increasing the test time compute strategies, there are basically two main mechanisms.
One is using revisions, where the model iteratively refines its predictions, improving over time upon the initial responses. And another thing which is basically called as search against verifiers. So इस मेथड पे उन्होंने एक प्रोसेस बेस्ड रिवॉर्ड मॉडल यूज किया है, जो बेसिकली उनके स्टेप्स या प्रोसेस के अगेंस्ट में वो मतलब रिवॉर्ड मॉडल यूज करते हैं, एंड अच्छे स्टेप्स के लिए दे प्रोवाइड लाइक बेटर रिवॉर्ड्स, which again leads to better training methods. So, Okay. So we are saying that so we can use small models with less parameters, but if we give them time to think or time to do reasoning, they will produce much better output as compared to a model with maybe 10 times more parameters than that model has, right? yeah, yeah. But I think Absolutely. So I think Sarva, it's a very good concept because I have also read in a lot of places that to solve actual use cases, we can use small model which are trained on specific data sets instead of like using with all different big billion parameter sets. So what do you think? Yeah, definitely. So see, even OpenAI O1 is kind of on the same lines. What they have done is basically rather, so GPT-4 was 1.7 trillion parameters, right? Now, to go bigger than that was foolish. So what they did was they did not increase the parameters a lot. They might have reduced the parameter size. We don't know the exact numbers from OpenAI, but they might have reduced it down. And what they did was they gave the test time computation a little bit more time. So when you do test time computation, you can reduce the model sizes. Again, in the previous paper, we also saw that it helps with the smaller models to increase their accuracy. Similar kind of things, even I think OpenAI is doing, where they are reducing the model size, they are increasing the test time compute, and then basically they are trying to increase the accuracy with smaller size, because eventually we want everything in 1 billion parameter model, right? So हमें reasoning को वहां तक लेके जाना है, And I think इसलिए लोग ये strategy use कर रहे हैं. and I think these all will lead to level 2 intelligence, right? So we have talked in our last week that if we give them time and if they have the steps to iterate, so they may be able to use those steps and time to generate much effective outputs. Absolutely. I think it's a good paper. Maybe मैं भी पढ़ूंगा, प्रतीक पेपर को आने तुम्हें बता ही दिया है, gist of it. So maybe we'll jump to the next paper. sure. It On the Zoom says करो, yes. learning strategies via bi-level research. प्रतीक भाई Yeah. बताओ क्या है ये, क्या करता है ये? And I think एक गेम भी है guys, हम ये पेपर समझेंगे and then we'll play that game and see how actually it works behind the scenes, right? So वो गेम एक बहुत अच्छा representation है ये समझने का कि how this bi-level research helps LLM to decide what next step it should take. Right? Yeah. So आपने सर रोहन भाई बोला कि मतलब ये पेपर बेसिकली एम करता है to like help design large language models, learn and improve upon strategic skills in multi-agent games. तो इन्होंने अपना basically क्या किया, like they have used a approach in like self-play simulations, which is called as MCTS, which is Monte Carlo tree search, where they like basically have iterations of reasoning steps where they think and they decide like what's the final response, and they like build the decision upon those iterations and give you the response. तो उन्होंने अभी मतलब like उनका approach basically ये है कि strategy tree is built and then evolutionary process it रोहन डायग्राम दिखा defines. ना. Sorry guys. हाँ, तो एक strategy tree build करता है, so it refines the previously generated strategies, learning a value heuristic to like evaluate the game states and like gradually improving on top of it, like the dialogue generation process. Okay. So is it like that AlphaGo that Google trained, something like that? हाँ. तो उनका अभी एक refined model निकला है. Like there's also a link अगर आपको देखना है तो वो उसी मतलब वो chess वाला game जिसमें like आप Train किया था. MC yes तो आप वहां पे यही MCTS हो रहा use था कर ना कि सकते हो. it was able to use that model to define कि next 5 step या 10 step में क्या चलना चाहता हूँ, right? हाँ. This is all about this only. And I think next game is more or less like a chess, right, Nisar, where it has to decide in future like what are the next 3 steps or 4 steps it has to take, right? So Yes. Yeah. Let's go to Monte Carlo tree search. Basically, so there are my favorite two game. things to LLM, Rohan. See, one is learning that you do on pre-training, right? And then the second part is searching, Right. जो tree search से ही use होगा. So let's try out this tic-tac-toe game and understand how MTCS या फिर Monte Carlo tree search works,
Let's go. Okay, so I will play as a human. So ये basically a game आपने TikTok तो खेला ही होगा, right? So I'll first start with this position, and then we will select make MCTS move. So what we'll do, Okay. right? So it will give us a visual representation. So it will take this as an input. तो यहाँ पे इसको पता है कि human ने यहाँ पे डाला है, right? And then I can either select next action or next iteration. So next action Let's will go with next action. right. So if we click on next action, तो इसने क्या बोला कि अभी human यहाँ पे है तो next वाला block मैं यहाँ बना सकता हूँ, right? Survive. And maybe I can again click next action. तो वो अभी वो सोचेगा कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि ह्यूमन ऐसा डाल सकता है, राइट? वी कैन सेलेक्ट these all blocks and then I will select these all blocks. Right? And it has decided that the winner will be human. हाँ, yes. थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना रोहन, because प्रतीक का स्क्रीन है वहाँ पे, तो थोड़ा मतलब हाँ सॉरी, मैं कर लिया समझ गया, राइट? एंड आई थिंक यहाँ पे आप एक नेक्स्ट आइटरेशन भी देख सकते हो, राइट? कि वो वाला आइटरेशन में तो ह्यूमन जीत गया, राइट? सो नाउ this Monte Carlo tree has to find a way जहाँ पे वो जीते, ऐसा है क्या सर? So will it go for next Monte Carlo iteration? tree search is basically, it's going to try those 1000 iterations. It's going to parallelly think on all these iterations, and उसमें से फिर जो उसको best move लगेगा वो choose करेगा. It's not going to just think on one. So let's do next iteration and see what it does. So these are the two iterations it did, right? Next iteration. 3, 4. Yes. ये This is what I'm 4 talking about. iterations हो सकते हैं. से वो 1000 करेगा, right? यहाँ पे 10 ही है. So it's thinking about all the positions. Matlab what Yes. first. So let's go from the start. Let's go from the start, right? So when we did H in one corner, it tried to do M in third. Yeah. And then it tried M over on the other position, then M on the other position. And it's doing a Monte Carlo tree search on all the positions, something like what you would do in chess also. Chess, maybe you could do this, right? And then go down. Yes. And okay. And then we have one more step after this. So after it took the previous step of that, and then it predicted on top of that. So if H would do here, let's do next iteration. Next iteration, okay. Here we have 2 iterations now. It's thinking on top of thinking on top of thinking. It's basically hallucinating all the possible scenarios. That's how AlphaGo came into the picture, right? What they did was basically they created an RL model, and they gave the model self-play mechanism. So all these models were playing against each other, and they would keep on doing it. They spent $35 million, and then out of that they got this AlphaGo model, which was like self-played on like billions and millions of times on it. So that's how it became better, by playing against itself. So this is how Monte Carlo research works. So I think यहाँ पे हम देख सकते हैं कि we have already used 30 iterations, and these are different iterations that it can think of, right? So let's say make play, and let's see what it thinks and what it decides to play its move. So we'll say play, and इसलिए तो उसको सबसे safe यही लगा सर भाई. Okay. I think I'll select this, and अरे तू जीतने के लिए select करना भाई. मैं आसान करके दे रहा हूँ यार, अब तो वो जीत जाए मेरे से. ठीक है, चलो. I think we'll say next action. So it is saying कि और एक और next action करता हूँ. Winner H हो जाएगा, मतलब देखा ना सर भाई. Winner is still human. Yes. Winner is still human. So it is saying that it will gonna do here. So I think it's fine, right? Because ये वैसे भी 1000 iterations करने वाला है. This is just one action yes, it is exploring, correct. Rohan. Correct, this is just one action it is exploring. Now in the current next iteration, it will explore another action. Next iteration, it's going to explore. So it's going to try this thousands of times. Simulation है. This is basically simulation. देखो change हो गया, right? Because जब मैंने उसको make play बोला तो initially first time उसने सोचा यहाँ करूँगा. Oh shit! But उसने यहाँ कर दिया. But I think it's a pretty good game to understand like how this Monte Carlo research work. We'll again say, so it's the same thing. We can have different iterations. Maybe 50, 100. Here it has 1000, so it will do this 1000 times. And then we can make our next action, or we'll make it play. So लगता है ये game शायद draw हो जाएगा. So the winner is machine. Oh! हार गया मैं, bro. Machines have won, guys. Machines have won. Monte Carlo research में खो गया था, इसलिए मैं हार गया. But I think it's a good way, and I hope कोई भी इसको समझ सकता है देख के कि how it works. Let's go to next thing, Ron. Let's go to next thing. I think ये तो हमने already देखा था last time, right? Yes. Doesn't make any sense. So let's go to the next one. Twitter this is threads. The Twitter thread from this Dr. is Nisar Jim bhai. Fan. This is Nisar bhai, your favorite thing to do. Okay. Find Twitter Reading threads. Reading tweets. Yes, I think
Zoom is right? I think we are already on Yeah. So 50% let's Zoom. let's Okay. read. Yeah. Let's read what Dr. Jim Fan has to say. So OpenAI Strawberry O1 is out. We are finally seeing the paradigm of inference time scaling popularized and deployed in production. So what we are talking about is giving model time to think. That is inference time scaling now. Till the time what we were doing pre-training based scaling, where we were getting these thousands and thousands of H100s and doing pre-training. That was when we were scaling pre-training part. Now we are scaling the inference part. So what does Jim Fan say? Jim Fan says you don't need a huge model to perform reasoning, right? Lots of parameters are get dedicated to memorizing facts. In order to perform well in benchmarks, it is possible for factoring out reasoning from knowledge. So what he's saying, you don't need a lot of big parameter model just to reason, right? A lot of things are just getting stored in the memory right now, right? Then what the second point, it's saying that a huge amount of compute is shifting to serving inference instead of pre-training and post-training. A huge amount of compute is now going to shift from pre-training part to the inference part, because now when the model is thinking for 50 to 53 seconds, वो कहीं तो GPU पे run हो रहा है, right? Right. The process is well suited for problems like AlphaGo and Monte Carlo research. This is जो what we हमने talked already about, देखा. right? But I think Nisha, do you think because of this approach, token users will now increase? Because जो वो सोचेगा and it's gonna design all those steps, so it's gonna the use the token from that pool of token that will be available at that point of time, right? Absolutely. So see, when the model is doing thinking, that is basically is using tokens, right? So token usage is going to be there forever, right? So बढ़ता जाएगा रीजनिंग की वजह से इट्स गोना इंक्रीज इन्फरेंस स्केलिंग लॉ लॉन्ग टाइम अगो तो ओपन को तो 2-3 साल पहले से ही पता है ठीक है हमें भी पता है two papers came out on archive a week part last month. Okay, now let's go to the fourth point, Ron. Yeah. What does it say? Productionizing O1 is much harder than nailing an academic benchmark for the reason again. You have to decide when you want to stop thinking, when do you want to stop functioning, what is the reward model, what is the success criteria, which tools to call, code interpreters, CPU processes, or because when the model is using this code interpreter, it has to manage the CPU processes also, right? Yes. वो thinking 10 दिन तक नहीं कर सकता. It has to just think, finish it in a minute, and then give out responses. That's So what he's Nisar, saying here. doesn't it will become something like Crew AI or AutoGen, right? Because वहाँ पे भी हम यही करते थे, but there we used to actually attach all these different agents to perform our task, right? But now Mm-hmm. with this, it looks like it's gonna do it. Then they're going to do it inside the hood, right? So we Yes. don't have to explicitly create those agents, or maybe we don't have to even use those complex agents to perform some tasks that we initially used to do. Yeah. Basic chain of thought again, Rohan. Basic chain of thought will be solved, but when you want to solve bigger problems, you need advanced agents. So now when you bring in two agents, if you bring in two O1 previews, you will have even more smarter agentic system than what you had previously Correct. with 4 O's, right? Yeah. So 4O agentic system was some kind of dumb because it would sometimes send message to random agent and some go haywires, go off the loop, go off याद the है. radar. Yeah, I remember. Yes. You have to use group chat, and then we have to Yes. define like from here it can jump to here, this agent and all this configuration we need to do. Correct. So I think it's a good thing. Maybe we'll see future like how it will actually improve our production grade application accuracy, and does it able to solve real problems, right, that we experience in our day-to-day life. Step 5 is very important. So strawberry easily becomes a data flywheel. If the answer is correct, the entire search trace becomes a mini data set of training examples, Right. which contains both positive and negative rewards. इसका मतलब यही है कि जो भी chain of thought निकला, let's consider a math option, right? Math question. And what happens in a math question is we know what the answer is, right? So if we are generating the whole stack trace, and at the end of the day, the LLM gives the right answer, that means that the chain of thought it has used previously is correct. The approach is correct. Everything is correct. Now, once you know the output is correct and the thought process is correct, you can use that whole trace as a training example in your data set. That becomes part of your data set. Okay. So this is how they are going to, so what OpenAI is doing right now is using these oven models, the strawberry models, and creating the data set for the next frontier model.
the next GPT-5 of the world and all that, right? This is how they are going to do it. This diagram is also very important. You can see this diagram. So I think the only difference we can see is कि पहले inference के लिए we used to give less amount of time and we used to spend more time either doing pre-training or post-training. But अब people are mostly focusing on giving them the time to think. I think पहले में भी अगर हम जो भी tutorials देखते थे on prompt engineering all this, it used to talk about that we need to give model time to think, right, for better accuracy. But अब उन्होंने model के अंदर ही inject कर दिया है, so people don't have to explicitly tell it like पहले हम लिखते थे, right, कि think step by step and then derive this result, or maybe don't do this, don't do that, and all those type of things, right? So definitely with this coming in a picture, I think the answers can be a little slow as compared to what we used to get previously, but the accuracy will definitely increase. For sure. Let's go now to the next thing. ये तो देखा था, ये नहीं देखने This is the benchmarks. Okay. So what does Jason have to say? Let's quickly go through what Jason has to finally sharing. Super excited model. That Ron, go ahead. You take this tweet ahead. So it says that super excited to finally share that I have been working on at OpenAI. One is a model that thinks before giving the final answer. So I think it's the same thing that we have seen in our previous example, right? That we are increasing the inference time, which is giving the model more time to think to give us more accurate result. First, it says that don't do chain of thought purely via prompting. Train model to do better chain of thought using RL, right? Reinforcement learning. It is saying that instead we dependent on user to give us the prompts to do chain of thought. Why not we train those models to actually do it themselves? So that अगर user हमको कम भी prompts देगा या maybe prompt quality is not good, model will be able to convert it into a very good chain of thought prompt and then use it to derive results, right? This is the first thing. Second, it says that in the history of deep learning, we have always tried to scale training compute, but chain of thought is a form of adaptive compute that can also be scaled at inference time, right? So this is what everyone is talking, Rohan. This is what everyone is talking, right? Yes, inference time compute. Let's go to the next one. Do we have something interesting information in the next I think that it says that AI model chain of thought using human language is great in so many ways. The model does a lot of things like reading. I think it's the same tweet, but written in a different way, right? Where they are talking about how we can increase the inference time, how we can give model more time to think, and that eventually may increase the efficiency of the model, right? Awesome. The next tweet is of AI breakfast. This is your favorite tweet, Nasai. Did we just get AGI today? And Sam Bhai says no. Not even in caps. No. So I think we still have to wait. What do you think, Rohan? What do you think? How much percentage is this AGI? So if you say that this is AGI, what is the percentage you think this is AGI? I don't 1% maybe. 1%. Okay. Maybe what about you, Pratik? Maybe that is a bigger number because I think it's not AGI. These are the building blocks of AGI, right? Like this agents, there's time to think, chain of thoughts, reinforcement learning, and different learning techniques that we have seen in our papers, research papers, right? But eventually it will be there. But right now, I think we still have a lot of time before we actually see AGI in action. Long way to go. Long way to go. Yeah, buddy. Long way to go. What about you, Pratik? How much percentage is AGI? Because Pratik has been playing with O1 mini model, O1 preview mini model. He has been experimenting it a lot on coding. So I want to take a review from Pratik. How is it? What is the percentage? And how did you like it? And what was your experience? Like अगर हम इसको normal model से compare करें, like the ones that you are using right now, it's the 4 model. तो ये बहुत ज़्यादा बोलता है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा. ये तो मैं भी मानता हूँ. बहुत token uses is like very high. It's too much. एक तो सोचने टाइम बहुत ज़्यादा token use करता है, and then and I think ये ज़्यादा इसलिए बोलता है क्योंकि जब वो chain of thought का prompt बनाता है तो इतना detail बना देता है कि next वाले answers के लिए उसको लगता है कि यही बोलना चाहिए. Right. Yes. So it's good for one question, one answer, but it is not good when you're talking a lot with it. Yeah. So like few shot optimization में मतलब few shot prompting में आप उससे अच्छा result निकाल सकते हो. Like
एज यू टेल स्नेक गेम में कि पहली बार में तो नहीं उससे नहीं होगा, और आप थोड़ा बातचीत करोगे उसके साथ, बट लाइक इट थिंक्स अ लॉट, उसका रीजनिंग बहुत सही रहता है स्टेप बाय स्टेप। मान लो लेट्स से अगर आप उसको दे रहे हो कुछ चीज आपको डिप्लॉय करना है, एंड लाइक व्हाइल डिप्लॉइंग यू हैव टू सेट अप द रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी, तो उसको मालूम है कि किस दो पैकेजेस के बीच में उसका मतलब कॉन्फ़िग एरर आएगा या मतलब डिपेंडेंसी एरर आएगा, तो उसी हिसाब से वर्जन सेट करके देता है। So it's smart in that ways. अरे नंगा आदमी क्या कौन था भाई वो छोटा भीम था क्या? अब जो था ब्रो था। No. Yes, we did get AGI today. Okay. I So think are we done, Ron? Are we done with this? Or we do? Are Karpati's tweet is remaining. Karpati's tweet is remaining. final. I think No, how no, much. not this one. Not this one. Not this one. Yeah. Okay, yeah. This, I think it talks about reinforcement learning and how human feedback is being used, right? This is really technical tweet, but I will just quickly go through what does it mean, right? Reinforcement learning is just bare RLHF, right? ChatGPT was trained on RLHF, fine-tuned on RLHF. It's just barely reinforcement learning, what they are saying, right? Reinforcement learning from human feedback is the third and the major stage of training an LLM. After pre-training, after supervised fine-tuning, we used to do RLHF, which, when users give thumbs up and thumbs down, it Right. used to do give us output. But we have moved from that paradigm and now we have moved to RL. What is RL? Basically, the model is going to self-play. So just to give you an example, let's say if you ask a question, right, a math question, model will generate first 10 answers, right? And out of 10 answers, it will be a very good possibility that one of or two answers are correct, right? And the whole chain of thought is also correct. Now you take that information and you retune or refine tune the model, or tune the reward model. And once you do that, you now know what is the exact answer to that particular problem, like the perfect answer with chain of thought. And that gets used again and again. Self-play happens. There is also reward modeling, which happens. So this is what the gist of the idea is. He's referring to AlphaGo. He's giving examples and deriving information from AlphaGo and how it could be used in the LLM world. That is what is the summary of Andre's tweet. Really great tweet, a lot of information. I भाई will not tweet go है या into book है, detail. पहले ये बता. Yes, he's a teacher, so he will tweet a book. He will book a tweet. But I think, yeah, it's right. But I think nicely explained, sir. So that's the gist that he's trying to say. And we hope we will see this more in, maybe not even in GPT model, but in normal models, right? That they will also try to incorporate these things to increase their accuracy and their performance. Yes, the next level of Claude models, the next level of Llama models, all are going to have this baked in. So this is all going to be, again, table stakes. Everyone is going to make this chain of thought part of their model and increase their inference time part. And this is the Okay. final thing. How much does We will AlphaGo not go into zero this cost? one. It's But not I that think, an yeah, we have important. already discussed, right? It took them 35 million, right, Nasar, to actually Yeah. train that model, and it is very costly. So I think in future, if anyone wants to do it, they have to have a great funding or maybe family money to do it. It's not possible by us, so we'll not touch it. Yeah. Okay, so this was great session. Thank you. Thank you, Prateek, for giving us all the information on the strawberry architecture. It was really good having you here. We are going to have you regularly. So, Rohan, any last words for Prateek? Yeah, I think it was a great discussion. So we understand like how the new models will make use of this papers or make use of this technology to improve their performance and accuracy, right? And I think it's a great start because it's just been not more than 2.5 to 3 years now that we have seen now so many changes in how it used to work, right? And now how it is working at this point of time. So I hope Pratik will read more papers for us and give us more insights like how we can improve our performance or maybe how the world is thinking about it and how it will actually go in the space of AGI that we think that it will become eventually. Thanks a lot, paper boy Prateek. Any last words from you? Mute पे है भाई.
अच्छा अच्छा, सॉरी। लास्ट वर्ड्स क्या मिलता रहता है और क्या। चलो ब्रो चलो फिर। फिर ठीक है, चलो सी भैया, यू गुड सून। नाइट चलो, ब्रो। अच्छे से पेपर गुड पढ़ना। नाइट। डोंट डिस्कनेक्ट, ओके, स्टे ऑन म्यूट। अच्छा वैसा क्या। ओके, हाँ, चलो। बाय। बाय। सो रोहन, shall we move on? ओह या बॉय, हमारे पास तो अभी भी और भी है। Oh yeah, अब आए हैं सबसे मसालेदार बातों पे। We are here with the weekly AI न्यूज़। news. सो आई थिंक सबसे Cringe फर्स्ट content in the house. सो आई थिंक सबसे ज्यादा क्रिंज जोमेटो ही दिया हमको इस बार, राइट निसार Okay, भाई? so what is the first news one? फर्स्ट Zomato AI bans Zomato, bans AI images of food from its platform. That is what is the news. The first news. Let's go to the link and see what is the exact news over here. इट इज निसार भाई। So Zomato has recently implemented a ban वन on सेकंड। AI-generated images in in the menus and restaurant partners effective of 16th September 2024. The decision is stemming from the concern that the authenticity and the customer trust is the issue. So basically people were, uploading their AI generated images in the restaurant menus, and when you order it and you get it home, it was something completely else. तुमने ऐसा मेरे साथ मंगाया हुआ था। है। सो हाँ, आई थिंक यस वी हैव सीन दिस वेव राइट, वेयर मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स आर यूजिंग एआई जनरेटेड इमेज, और अगर आप जब आप मंगाओगे तो इट डजंट लुक्स लाइक दैट जो एक्चुअल आप प्रोडक्ट आता है। जैसा भाई डिलीवरी बॉय का कॉल आ गया, यस। लगता है मेरा फोन आ गया, वन सेकंड। अरे जोमेटो वाला सुन लिया। हेलो। जाओ जाओ, लेके आओ लेके आओ। विल वेट फॉर यू। ओके।
Woohoo! Cancel, why are you back? Any chance? Hello guys. Am I audible? Testing, testing. वीडियो 1, 2, नहीं दिख 3. रहा ब्रो. आ गया मैं आ गया. ओके सर आ गया फाइनली. Okay. अच्छा, you went to get your iPhone. Congratulations, Rohan. मुबारक हो, नए आईफोन की मुबारक हो. एप्पल इंटेलिजेंस है क्या उसमें? भाई अभी तो रोल आउट नहीं हुआ है शायद. आई हैव नो आइडिया है कि नहीं. अरे उसमें चप्पल इंटेलिजेंस है भाई, चप्पल इंटेलिजेंस है. लेट्स सी अंदर क्या है. अनबॉक्सिंग करेगा लाइव. चलो अनबॉक्सिंग कर लेते यस फिर न्यूज़ देखेंगे. फिर न्यूज़ देखेंगे. अनबॉक्सिंग है फोन गाइस. ओहो. है. चल ठीक है. लेट्स नॉट लेट्स गेट स्टार्ट. डिस्ट्रैक्टेड रोहन. एक सेकंड ब्रो. लाइव स्ट्रीम करना चार्ज तो दबा इंपॉर्टेंट के है. देखो. Whosoever has joined, just don't forget to like the stream. चलो And आई let's थिंक get started. इसको मैं बाद में करूंगा अनबॉक्स अपना एयरपॉड प्रो 2 को. Yeah. फोन तो दिख रहा है सही. साइज भी सही लग रहा है. मुबारक हो, मुबारक हो. बहुत बहुत मुबारक हो. अब मैं टिकटॉकर बन जाऊंगा सर भाई. Hey TikToker. So I think let's start again, okay? So we'll start from Yes, our yes. AI news. थोड़ा सा Yes. सॉरी गाइस वो फोन आ गया था तो क्या ही कर सकते हैं. मैं 2 दिन से इंतजार कर रहा हूँ. No worries, Rohan. No worries. We are back with our AI news. So the first AI news we have is Zomato bans AI images from, food generation of images. So let's get started, Ron. Let's open the link and see what they are doing, and we will see how they are detecting all these AI images. We'll try to understand how Zomato will be, identifying all these AI images. So the first thing that we saw was, Zomato has recently announced that it's going to ban AI generated images from its menu, of its restaurant partners from 16th September 2024. This decision came because, it was a lot about authenticity and customer trust. The CEO Dipender Goyal also highlighted that these are misleading representation and people were trying to refund their requests, and a lot of things like that were happening. Now the reasons for the ban, let's just quickly go through what are the reasons of the ban. The first is customer complaints. As we saw, ये the तो मैंने image was misleading. ये तो Yes. मेरे साथ भी हुआ है. So I ordered from one of the restaurant. इमेज अलग दिख रहा था but when it arrived it was totally different. But correct. So I think this is one of a bigger concern that maybe other partners will also face, but this is a big problem. It's a misrepresentation of the product that you are selling, right? Which is not good. Definitely. Then the second reason is that they want to preserve authenticity, because what you see, you get. That is what they are trying to do, and proactive measures because a lot of restaurant owners, about 10% partners utilized AI generated images. So they wanted to take a preventive measure. Um, and to all this, to support all this, what they have done is they have implemented uh, an AI tool that is capable of detecting AI generated images with an approximate accuracy of 90%. So that is a really good accuracy, Ron. 90% accuracy if this is an AI generated image or not. And they're also providing photography services to their, restaurant partners for Vendors. 4,000 bucks, which is way below the market standards. Now let's see why it is opposite to what Swiggy is doing. This is all Swiggy versus Zomato that's going on. The Right. move is in contrast. Yeah. स्विगी बोल रहा है कि तुम AI generated use करो, but Zomato is like no, we'll preserve the authenticity. So let's see ना sir, क्या होता है. This is what it talks about, right? Swiggy is basically providing AI-powered photo shoot services to their restaurant partners, while Zomato is completely opposite. You see, these two big companies are just taking completely different stances on AI-generated images, which is really good. Like I found really interesting that both the companies are playing their game in a different way. And so I wanted to understand how this system would work and how this AI generated image detection is working. So let's go and ask O1 preview. Let's go to our chat gpt model and ask it that how such a system can be implemented, right? So we will Yes. go to our chat gpt and ask how would Zomato implement this AI image detection system. So I'll just copy this thing, Yes. and just
I will give this as an input to our strawberry model, right? अरे यार, इतना आगे निकल गई, copy नहीं करने दे रहा है. Okay. So now I am in GPT. So I'll select GPT-O1 Yeah. preview. So I'll paste it, it. and then we'll have to ask. Zomato is doing this. How will you implement this? How can we implement this? This tell me step by step How to can we implement? do this. Both. Yes. Right? That's it. Yeah. So let's give the Start model some time thinking. to think. Yeah. Inference time scaling in my house. Taught for 5 seconds only. Oh, pretty fast. ये लगता है उसके लिए बच्चों का खेल दे. He will be अरे able. अरे हमने बहुत बहुत गलत किया ब्रो, बहुत गलत किया हमने उसको वो फालतू का इन्फॉर्मेशन देना ही नहीं था ऊपर का. वो देखना है पॉलिसी ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने बैठ गया वो, और मतलब एआई सिस्टम बता भाई कैसे बनाते हैं. Okay. नहीं नहीं I नया have- चैट खोल, नया चैट खोल. I will write it. तो मेहनत करूंगा. 1.5 छाना है भाई, ये 1.5 छाना है मॉडल. I have to create a model to check whether the image is generated by AI or Gen not. AI or not. AI or No. not, Gen AI मतलब. Using AI or not, okay? And we have to provide that the images will be of food. Yeah. The images will be of food. Images will be of food. Yes. And this has been implemented by Zomato recently. So I want to understand how they have built this system. क्या लगता है सर भाई, अभी बताएगा हमको ये? Yes, सब बताएगा. एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने का उसका चेन ऑफ थॉट हिल जाता है मेरे को लगता है. अरे उसको ज्यादा नहीं बताने का. Real time, gather a large data set of real food to create, photographs. let's start from scratch. Let's start. It's not for 4 seconds, not much time, right? And so first thing it's telling to create a model that can determine whether an image of a food is generated by AI or a real photograph. You can follow systematic approach that involves data collection, pre-processing, model selection, training, and evaluation. Let's start with the first step. It's the data collection. So you gather a large data set of real food photographs. This can be sourced from existing database or publicly available images. So Zomato has a को तो lot प्रॉब्लम of ही नहीं है images. ये तो, राइट? बिकॉज जोमेटो They के have a पास lot तो of images. सिर्फ इमेजेस ही है. So this they have. Now what they'll do is they'll collect AI generated images of food. This also they have, because they're 10% of customers were having AI generated images. You can generate it using GANs, diffusion models, DALI, Midjourney, all this good image models. You can generate it from there also, right? Now comes the next step, Rohan. Deep data pre-processing. Go ahead. So it says the first step we will do is to normalize the data that ensure all images are of same size and format for consistency, right? So even जब हमने Flux model की training देखी थी, तो I think this is a common point that will repeat for all different types of data pre-processing, right? For it be any model. Second is that augmentation, apply techniques like rotation, flipping, and cropping to increase the diversity of a data set and prevent overfitting. So ये basically overfitting और hallucination को basically कम करने के लिए these are the methods that we can use, right? So whenever we train computer vision model, so what we do is we augment the data. Like we also send flipped images, we also send rotated images, we also send black and white. So those kind of, so that overfitting does not happen for the vision model. And finally, it takes about labeling. So clearly label each image as real or AI generated before passing it to the model, right? So this is a common technique. Next, we have feature extraction. So once we are done with data collection and data pre-processing, then we'll move to the feature extraction, where we'll use CNN, these are your favorite, to automatically extract features. It's your favorite, your favorite, not my favorite. But I think, so eventually it is saying that we can use any CNN network, and which will extract all the features of the images and alternatively explode handcrafted features that might highlight artificial found in AI generated image, such as texture, inconsistency, or unnatural lighting. So these are the different ways that we will gonna. So these are just feature extraction is very important one. Correct. और यही एक्चुअली यूज करके आप मॉडल ट्रेन होगा और समझ पाएगा कि
whether it is a real image or an AI generated image, right? This इसी features को use Yes. करके. Then Absolutely. we have a model selection. We can either go for CNN or maybe अभी कोई तो large language model भी आ ही गया होगा जो ये कर देता है, right? So it's We all will up. have to use a vision model, but CNNs में we can use ResNet or efficient net. So what they are doing is basically they are picking up a base model, ResNet, and they are fine tuning it on some task, a classification task, whether this is real or AI generated. This is the two things the model has to output. So the input will be an image, the output will be only two things, real or fake, real or AI generated. So this is the model selection part where they are trying out with ResNet, Inception, or efficient net. Now comes the training the model part. So you split your data set into training and testing sets. 70% goes to the training, 50% goes into validation, and 15% goes to testing. Use this training set to teach the model to distinguish between real and AI generated images. Validate the model's performance using validation set and fine tuning hyperparameters accordingly. This is what Zomato is saying that 10%, 90% accuracy we have. So they have tested it on their validation set and saying that, okay, now we can 90% accurately predict how the AI generated images work. What is the step number 6, Rohan? So step number 6 is evaluation. So it is like assert the model performance using metrics like accuracy, precision, recall, and F1 score, right? So it talks Precision, about recall, F1 score, standard stuff. Standard stuff. So it's about like once you have trained the model, then you have to check whether it is able to classify my image or not. I think it's a basic problem of classification that they are trying to solve, right? But instead of classifying dogs versus cat, here they are classifying AI generated image or an actual image. And Absolutely. And it says that perform a receiver operating character analysis to evaluate the trade-off between true positives. It's basically false precision recall positive. F1 score वही है. Right. Precision recall F1 score. Next step is basically you deploy it and then you continuously improve it. And then there are some challenges and understanding Zomato's approach. While specific details about Zomato's implementation may not be publicly available, they are likely to follow a similar approach. Companies like Zomato may use such models to maintain authenticity of their platform, ensuring that the food images are genuine. That is exactly what they are using it for. Let's just go and see, Rohan, what are the tools and frameworks that would be required. You would need. So it says TensorFlow, and I think it will give you all the basic libraries and packages, right? Because you're just thinking in more in lines of CNNs and TensorFlow, PyTorch, and it uses OpenCV and Keras to it. But I think we can also use any vision transformer at this point of time to achieve these things much easily as compared to starting it from scratch and start training a CNN model, right? But Ron, see, if you see from Zomato's perspective, right, a vision model will be very expensive. Correct. Because they have to validate all the 100 million images they have on their platform. So what they have done, it is good for them that they have implemented their own classifier and which does this so that they can use it for Anant Kal ke liye. Like forever they can use this. And the only thing they have to pay is the computation cost, not the vendor cost, right? Yes. So I think it's a trade-off, awesome, but I think the whole idea is this, that this is how it may work or may not work. So someone has to try and see whether it is working or not. But this is what GPT thinks, that if he has to do it, he will be doing it like this. Definitely. But even Zomato might have taken some similar approach only. So it's absolutely correct what we saw. Yeah, and I think there's no other way, right? So they have to take some bunch of images, they have to extract the features, and depending on those features, they will train a model. And once that model is trained, then they will gonna use it to see what's the accuracy rate, how can we improve it, do we need to retrain it or whatever. Precision F1, all that. Precision F1 and all this. Chalo, let's go to the next news, Rohan. Next news, which is the next news? Next news is like my famous. So it says Alibaba releases 100 open source models now. So in this race, in this AI race now, I think after AWS, GCP, Google, now Alibaba is focusing more on releasing open source models so that people can use it and actually see their power, right? How we can incorporate it in our projects. So let's go to the link. Yes, let's see what models they have launched. So let's see what 100 by what do they mean by 100. Let's go down. So I think it's these are the models. Qwen 2.5, Rohan. Qwen 2.5 ranging point from 0.5 to 72 billion. 0.5 से लेके 72 billion बनाया है. Good job. तो मुझे लगता है उन्होंने small
ranges के parameters के models आपको दिए हैं, so that depending on Yes. your use cases, different people or different entity can pick different set of models that is useful for them, instead of everyone going for 72 billion parameters. Yes, yes. Even they are supporting 29 languages, which is good. And I The think industries, it yeah, is really required, right? Because to perform any actual task, it will not, all the documents that you will receive will not be always in English or in French. It will be in different languages. definitely. Let's go down. What else do they have? Let's see the highlights. I think What do they have to it say? also talks about multi-model AI advantage, where they will definitely give you a vision text to video model and a realistic scene creation 3D animation models, right? So which is not just about text, but it will also work beyond just text generation. So this is part of the Alibaba cloud, right? Yes. They're offering. That's good. What Maybe are the key facts? maybe we will also take that subscription, or maybe we should apply for Alibaba, and then we can see like how it is working, or what are हाय those guys are अलीबाबा doing. के 40 चोर थे दूर रहो उनसे थोड़ा नीचे जाओ And I think now हाँ that's it. So basically, go infra up there's nothing yeah this infrastructure one update. key facts let's just go to the key facts yes So it says that 100 open source Qwen 2.5 models are released. They have just changed the number of parameters that is used to train the model. Then it talks about that. Then it supports 29 different languages. That means it will have multilingual capacity or capabilities. And then we have quant models surpass 40 million downloads across platforms. So I think everyone in China is trying this. We said quant model inspire over 50,000 models on Hugging Face. it's quite popular on Hugging Face Ron. It's Yes, yes, quite yes. popular on Hugging Face I think most of the my fee models and this Quen model are very popular there, because they are smaller in size and they have very less parameters as compared to other models that we have. yes and they are also launching a new text to video model that can generate videos based on English and Chinese instructions But I think this is one of the toughest tasks that they will be solving, because we don't have that much publicly available data to train the model. This is what I know, but we'll see. let's see what the video says Ron just let quickly go through what the video says Someone is WhatsApping me, bro, and it is. yeah I was also hearing ting 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 One sec. There it is, bro. Come on. रोहन गर्लफ्रेंड को बोल बाद में बात करेंगे ये अमेजोन वाला भेज रहा है भाई मेरे को, योर ऑर्डर डिलीवर्ड, ऑर्डर डिलीवर्ड, ऑर्डर डिलीवर्ड। गर्लफ्रेंड नहीं भेज रही है, क्या करूं मैं? चलो you can share the audio and we can see the video One sec, huh? I'll just reshare it. So I'll stop sharing mm-hmm. and share sound, share. कॉपीराइट तो नहीं मार देगा ना भाई मेरे को? नहीं नहीं चलो चलो हम कॉपी मारेंगे उसको चलो पर हम ही भाई उसको कॉपीराइट मार देंगे मुझे इनसे बहुत डर लगता है ब्रो. These are like they will give you like copyright. I think now we're अगर good. अगर अलीबाबा अपने से कॉपीराइट से पैसे कमाना चाहता है तो बहुत बुरे दिन चल रहे हैं उसके चलो ठीक है. I think shall we start? yeah let's get started ये देखो क्वेन की फैमिली लॉन्च की गई है. 7 बिलियन पैरामीटर्स, 32 बिलियन पैरामीटर्स, 110 बिलियन पैरामीटर्स से 14 बिलियन पैरामीटर्स. सो आई थिंक ये मॉडल गार्डन गैलरी है बेसिकली, जहाँ पे यू कैन सेलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स एंड देन यू कैन प्ले विथ इट, राइट? जैसे कि पीपीटी में भी है प्लेग्राउंड, राइट निसार भाई? yes Rohan so this looks like a cloud offering Yes. from Alibaba where they are offering all these 100 plus open source models they are going to bring in text to video as well text to image as well all this is going to come so I think this is good because it will increase competition right so the more players the Chinese will come in that's good for the whole US monopoly that is going on right now so in AI space specifically the Chinese are going to catch up soon which is good and I really there's only one option in China when you are talking about cloud which is Baidu Cloud. or Alibaba right Correct. yes And there's no other option. So even if
you as a company wants to deploy something, you have to get yourself onboarded to Ali Cloud because of data privacy issues. I think let's And see. regulation. And regulations, yeah. Hey, it looks like GPT API calls. See, Yeah. system prompt, users, role system, role user, and then content. So it's more or less similar. You can generate it with two models as well, Yeah. just for comparison. Right. So one it is using QuenMax model and one it is using 32 billion. And this is the difference that we can see, right? I think it's a good UI. Temperature. Yeah. So I think it's more or less similar to what we have seen in different in GPT models also, right? OpenAI models where we can change the top P or temperature or top K and we can have different types and combinations of results. Absolutely. So this is basically just like what this they have become one more API provider, Correct. like how ChatGPT is, Claude is, Llamas. So we have one more cloud provider which is going to come up with their own series of models, which are going to be more specific for their own country, but also they are offering it all over the world within 29 languages. Let's finish this video. I think इस वीडियो में कुछ नहीं है bro, यही है ठीक है, but let's see. And this is how you can create your APIs keys to use it via maybe via Python or Java or any programming languages. So I think it's same like Google Model Garden, but here they are calling it as Model Studio. So that's the only difference. Right, Nisar? Yep, and it's just by another cloud provider and coming with their own series of models, which is a good thing for competition, which is really good. Now let's go to the next news. We have Kling AI, which is version 1.5. So Rohan, this we tried out, a Yeah. couple of videos. So what we will do is we will see those videos, how those panned out. So let's start from the bottom. The first one was like my image, kind of my image with the Joker one. Yeah. So I think if you guys can see, yeah, this is the prompt we have used. So we have given it a single image that we have generated using the Flux model that we have seen in our This is Kling model run. So what? Actually, you're talking about the image. the image. Yeah, the Acha, actual acha, image acha. was generated using Flux, and then Yes. we are using this to convert that image into a video. So for that, we have used that image here, and then we have given Joker laughing and crying during the scene. So this is what it came up with, but I think it's It pretty. started with laughing and then it started crying. Yeah, and this is Nisar by base image. Very many. Let's see what Rohan is. I am the thing, bro. So I think this is the base image. It's generated by Flux model, and then we have used this prompt saying that Joker dancing and performing. I have no idea why it is dancing like this, but it's pretty cool. This is disturbing, Rohan. This is disturbing content, bro. Arey bro, I am क्या Joker. कर रहा है? What is the prompt? Dancing and performing. Okay. It's such a and I think it's such a simple prompt, right? Dancing and performing, but because maybe model knows the character of Joker, it has given him this set of expressions, right? Yes. Let's go to the next video generation. This was the image of Shah Rukh Khan I had generated a couple of months back. Oh, Shah Rukh Khan in multiverse. Movie. Shah Rukh Khan in multiverse. Crazy बनाया ना उसने animation तो. Correct. Yeah. I think it looks really good. I think it's still learning, but yeah, eventually it will. Yeah, the prompt: a futuristic warrior in glowing blue gun armor splits in a neon city, battlefield explosion, laser fire, firing in guns, camera shift between close-ups and intense expression and wide shot, chaotic combat. Pretty good, yeah. Let's go to the next one, Rohan.
This one? Here we Or have again Shah Rukh Khan in a 10-minute video, 10-second video. नहीं second वही second वाला. okay. Is the Okay, this second? is one more shot. This is the next scene. So Oh. भाई उसकी बंदूकें बदलती रहती है क्या? yes, bro. It पिस्तौल से changes शुरू किया from उसने. pistol to I don't know some sci-fi gun. लाइट सेबर भी लेके आया है वो. So I think the prompt we have used is a futuristic warrior. It's the same prompt, right? Yeah. Let's go to the next video now. No, this one. Third array bhai. Okay. भाई साहब. भाई उसने ये पूरा रोटेट कर दिया. correct. Like Kling is really powerful, man. Yes, and I think it also He- preserves the identity of that person. Shahrukh Khan Yes. लग तो रहा है थोड़ा बहुत. Character is getting preserved. It's not like warpy hands or something, but see, it's firing, and angle change. Wow, man. Wow. Nice. Video models So, have reached so far, Rohan. I think वो camera angle change करना भी सीख गया है. So how are you going to change your camera angles, right? That's pretty cool. Rohan movies बनने वाली है क्या? Yes, movies बनने वाली है भाई. जल्द ही. Yes. So what we will do is we will also make movies. हम भी कर सकते हैं, you right? know? हम भी ऐसे ही Yes. देख. हम दोनों अपने at कैरेक्टर least का create 10 trailers, फोटो, हाँ 10 फोटो निकाल सकते हैं. Then we can have those prompts written in such a way कि वो एक स्टोरी लाइन बना पाए. ठीक Maybe है. हम नेक्स्ट स्ट्रीम में अपन करेंगे एक काम कि तू बन जाना विलन और मैं बन जाऊंगा हीरो, या फिर तेरे को हीरो बनना है तो हीरो बन और सकता हम है. दोनों लड़ाई करेंगे. यस, हम कोई हीरोइन के लिए लड़ाई करेंगे, जो तेरी फेवरेट हीरोइन है उसके लिए लड़ाई करेंगे. ठीक है. चलेगा ब्रो. इसके लिए लड़ेंगे. ये कौन है भाई ऊपर? ये है आलिया भट्ट आलिया भट्ट. इन एन एलियन वर्ल्ड. वाओ. यस, आलिया भट्ट इन क्या एवेंजर्स. And this is pretty cool, yaar. I really like Kling.ai, yaar. It's really ये good, अभी really अभी good. आया है क्या? Because I have not heard about it. Yes. It's again a Chinese company. इतना जीपीयू ला कहाँ से रहा है भाई वो लोग, चाइनीज वाले लोग? अरे है उनके पास. जीपीयू का अब काफी. एक आखिरी वाला देखते हैं रोहन, जिसमें मैं हूँ. मुझे यस, देखना है. सुपरमैन. Superman doing Punjabi dance, बल्ले बल्ले, and then flying away in the sky at the end. ये क्या कर रहा है? ना बल्ले बल्ले किया उसने. बॉडी दिखा रहा है भाई तो हम लोगों को अपनी. जिम जा आज लेग्स प्रेस मार रहा था या चेस्ट प्रेस मार के आया है? आज मेरा चेस्ट डे बेस्ट डे था भाई. चेस्ट डे बेस्ट डे. अरे ब्रो, बट यहाँ तो तू कुछ अलग ही दिख रहा है हमको. चेस्ट डे बेस्ट डे दिख रहा है. चलो नाइस. ये उड़ क्यों नहीं रहा है ब्रो? एप्पल वॉच भी पहना है भाई उसने. एप्पल वॉच के साथ आता है वो. आई थिंक इट्स प्रीटी कूल एंड इवेंचुअली हम देखेंगे मे बी नेक्स्ट स्ट्रीम या फिर एक महीने बाद ये और भी पावरफुल बन जाए एंड मे बी वी कैन क्रिएट Definitely. longer form content instead of creating this 5 seconds or 10 seconds video, right? We are going to use this AI model and Rohan इसको तो पूरा postmortem कर डालेंगे. We are definitely going to create the movie. मैं हीरो, तू विलन. और मेरे स्पाइडरमैन. मैं बनूंगा स्पाइडरमैन. देखो मैंने टी शर्ट भी पहना है. स्पाइडरमैन की शक्ल नहीं दिखती ब्रो, तो फिर क्या फायदा? वो भी बात तो ठीक सही है. है. correct. हम चैट जीपीटी को पूछेंगे, उससे स्क्रिप्ट लिखवाएंगे, उससे सब कुछ करवाएंगे और अपन बनाएंगे. So that we'll do in upcoming streams. Do we have any more news for the day, Rohan? I think we are done. इससे ज़्यादा ओवरकिल हो जाएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा कि नए रिसर्च पेपर्स क्या आए हैं. फिर वी हैव सीन कि स्ट्रॉबेरी का बेसिक आर्किटेक्चर और क्या था. देन वी हैव ऑल्सो सीन लाइक कि ये फाइन ट्यूनिंग तो बच गया निसार भाई. Oh, shall I share my screen? Let's see. Yes. एक मिनट. I think फाइन ट्यूनिंग का स्टेटस देखेंगे. So रोहन्स लोरा फाइन ट्यूनिंग. Let me share my screen. Let's see रोहन कहाँ तक पहुंचे हम. yes, वो तो हम भूल ही गए थे कि वो हुआ है Yes. कि नहीं. But we were going to see this in the end of the stream only, right? So let's see. Correct. We share it. Are you able to see my screen? Yes, we are. But I have to adjust your Yeah. video. Just give me 1 minute. I'll put You you can do the here. necessary changes. Okay, let's start. You're good to go. So the training, Rohan, it says succeeded, but I don't trust it. Let's see down and see the logs. Okay, so 88% done, 88, 89, 90, 99, 100% done, and saved your output to the optimizer PT. That's good.
What else? So it's again training something and uploaded LFS files. So it Finally, has Hugging Face पे आ uploaded चुका है. these files to Hugging Face. Let's go and see Hugging Face if it has got this. I तो think इससे हमारा कंफर्म हो जाएगा रोहन कि हमारा अडेप्टर तो ट्रेन हो गया. Now the Right. next part will be we will use this adapter in the next stream to create image assets for you and me. So you can see Rohan Live 2 got updated an hour ago. nice. मतलब कि Pretty अपने cool. मतलब कि मूवी बनाने के लिए now I have my model and now I can use this model Yes. to generate different set of images जो हम King UI में जो हम use कर सकते हैं अलग-अलग जगहों पे to generate videos, right? Yes. So your model is ready. My model is ready. I think we are ready for a shebang bang movie चलाएंगे. चलो, it's good to know. So क्या आज ही टेस्ट करेंगे इसको? नहीं तो आज हम इसको टेस्ट नहीं करेंगे. We will test it starting from the next stream. Next stream, what we are going to do is we are going to create image assets of yours, image assets of mine, and then we will take it forward. Right. What's And it then on? we'll try to create a 5, maybe 1.5 minute intense It's really good, fight yeah. scene between you and me. Oh yeah. बहुत पेलूंगा भाई मैं तो बहुत दूंगा. चल देखते हैं. I will change your prompts. Smart Yes. move. I will change your prompt, Okay. bro. So I think Rohan, we are good to go. Let's close this stream. Yeah, I think And it's a we will I meet. think We'll meet on next Sunday. Same correct. time, same place, 8:30 p.m. कुछ नए न्यूज़ के साथ. I hope. Definitely some new news, some new demos, some new stuff. Enjoying it. Right. So निसार भाई, चलो good night. कल ऑफिस भी जाना है. Happy working week. Happy working week, bro. मजदूरी चलो के दिन शुरू. चलो bro. Good चल, night. bye bye. Sleep tight. Good night. Bye bye.